Good afternoon, everyone. I welcome you all on behalf of Spark Foundation to this webinar of how to manage your office virtually. So, let me introduce you the Spark Foundation. Spark Foundation is an educational institution which conducts webinars, seminars across the country on various topics, on various platforms with numerous speakers. So in this juncture, we are continuing having webinars on numerous topics. So due to the COVID-19 impact, you might be aware that offices are going virtual nowadays. So in this regard, we are conducting this seminar. So I would like Rajender Arora sir to begin the seminar by giving an introductory speech about the topic. Rajender sir, please. Thank you, Ashish. I welcome you all, friends, in this program. On behalf of Spark Foundation, I welcome you all. I welcome all the distinguished speakers of today's program, Jagjit ji, Angad ji, Sudeep Saxena sir, all the Thank you. other audiences who are listening to us through YouTube Live, through Facebook Live. The program which has been designed is actually for the purposes of combating the situation which is arising, which normally Sudeep says the new normal. So we are thinking to prepare ourselves for the new normal of these times, and this webinar is dedicated to understand with the distinguished speakers who are very well versed into their respective areas, and especially with respect to everything doing electronically, digitally, and managing all these things. So this program is actually dedicated to understand the nitty-gritty, how all we professionals can actually conduct our operations virtually, our offices virtually, with all the staff scattered across, and meeting clients, what all data tools are required, how to save data, what all other IT tools are required to conduct meetings, what are the roles of SOPs which are there. So I would not be standing much in between you and the learned speakers of the day. I would like to, at last, I'd like to thank the entire team of Spark Foundation, all the members across the country, Nilesh ji, Pankaj ji, Amit ji, Vishnu ji, Harish Dhyani sir, Sudeep Saxena sir also is very much part of Spark Foundation. Other members, Abhijit Bhai from Bombay, all the members who have been behind this particular initiative of Spark Foundation. I would like to thank them for having their constant support to the Spark Foundation, having doing their best to set an example for others to lead in education, in philanthropy, in every field, wherever Spark Foundation is able to do something, do their bit in order to uplift the society in terms of education and everything. So I like to thank each one of the members of the entire team across the country of the Spark Foundation also. Now I would request Sudeep ji to please start with his deliberation, and then before I invite Sudeep sir, I would like to introduce him. He is part and parcel of Spark Management Consultancy. He's a qualified CMA. He's been actively involved into public life also. He's been with the Cost and Management Accountants Institute also. He's an elected member with the Indore branch, if I'm not mistaken. Yes, and otherwise he's into banking operations, looking into IT issues, fraud and forensic audits, and many more things. And he's got experience of around 18 years now, and he has been doing earlier he was with the banking institution only, and now he's into his own practice, and looking and catering to all the corporate big financial institutions. So I would now request Sudeep ji to please start with his deliberation. Thank you. Thank you, Rajender ji. Thank you so much. So, I mean, this Spark Foundation, basically, through Spark Foundation, it is our initiative to disseminate
as much knowledge as possible. And rightly said, what we are trying to do is, I would again say, under the spearheading leadership of Rajender Arora ji, who has pushed us to come forward with so many topics and so many things. And of course, if you talk about today's deliberation, this deliberation is solely upon, I mean, we are facing a pandemic, we all know that. And like Arora ji quoted, that is very much a part of my WhatsApp status, that anomaly is the new normal. So what anomalies we are facing, what differences, what challenges we are facing right now, it is the biggest competitors to amongst, I mean, ourselves are the uh, professionals who are working into practice, because we are having small setups, we are having so many challenges dealing with the clients, catering to the clients demands, and especially going on to places like audit, like taxation, and like so many other things which require an extensive work from our side. And with these things, how we can manage, we can adapt to working professionally and working online in a virtual mode, so as to make ourselves more competent to the coming world. That is the basis for today's seminar. And I would like to start my deliberation starting with this only. Ashish ji, I'm just sharing my screen. Please allow that. So, if we just start discussing about the post-COVID scenario, there are few conditions that most of the professional firms are facing. The staff is either not available, or the staff is working from home. That is the biggest challenge. I mean, most of the articles staff, the trainees that come from different places, and they have gone home and are stuck there. The biggest problem is especially faced by those who are outside, who are having assignments outside the study, because travel is a strict no, even from the within the organization, and also from our homes we are having this pressure. Local commutation is also becoming a problem, a reservation, because we don't want to deal with so many clients going to different offices where there are so many people coming, because we don't want to catch this infection. And other offices movement is also difficult. But there is one thing that we have to see, that the business dynamics is changing, and the modern day business dynamic supports, first of all, collaborative efforts. Because we sitting at one place, if we are managing one firm sitting at one place, we cannot cater to clients at all the locations. So it is the time that the professionals, that the firms across the industry, across the country, should join hands, should share work with each other, should talk to each other, and according to their own standards they can get their assignments done, so as not to be on the losing end of the clientele list. Second is, working from home is a new trend. We all know that we have all have enjoyed approximately 3 months of our holidays, summer holidays, in adulthood, which I don't think will ever come in our lives again. Second, one more important thing is that the biggest heat is being faced by the service industry. You see, when we are talking about production, someday or the other, the demand will arise again, and the production industry will rise again to its same level. But the biggest problem will be faced by the service industry, because in the times to come, people who have become habitual of, I mean, availing services, they will start facing problems. They will see that without all services also they can survive. And the biggest cut down that any organization plans is on the service industry, on the service cost. So this is where we are facing a problem big time. The changes that we, whether we would like to accept or not, but that is changes are being forced upon us. One of the major changes that we have to work in an online environment. I feel most of the professionals of my generation have been born or started their careers when the computer age was already there. But there are some very senior professionals or professionals sitting at remote locations. They don't have much access to working online. Client management, communicating with the client online is becoming a problem, because sometimes you might be tech savvy, but the client may not be. That is another problem that we are facing. And of course, since our staff is not there at the office, managing staff working online becomes a problem. And of course, the complicated assignments like audit. I mean, you see, when we are talking about audits, we go to the clients, we go to the client place, we check the documents, we do so many things. And these become the biggest challenge, because we are not supposed to conduct audits now in an online environment. And this is becoming the biggest threat to how our professional is going to survive in the times to come. So if we talk about the way forward, one of the way forward is adaptation of technology. We have to adopt what technology is available, what comes handy. Of course, we have a bouquet
to select from. But whatever choices we have to adopt what is best for our size and for the structure of our organization. We'll have to learn what online office tools and office working tools are available for us, how we can manage according to them. And of course, I mean, a lot of these things will be discussed by the speakers coming after me. So I am just taking you through a brief of all these things. From remote locations, how can assignments be managed? I am sure most of the professionals in this time have conducted their statutory bank audit assignments in an online mode, and we know what problems we have faced. In fact, we also proposed one of our clients, which is a bank, that we would be happy to cater to them an online document management solution which can enable an online audit assignment for them to be conducted from remote locations. That was taken well by the bank, and they are still considering it amongst their board. So these are the things that are coming up. And management of staff, I mean, there are tools for that also. We'll have to learn how to go ahead with that. Now let us get to the concept of smart office. So how does a smart office look like? It is very easy to say smart office. We are living in the age of smart TV, smartphones. What can be smart office? Smart office, first of all, consists of a paperless office. Most of us haven't even thought of how paperless office can look like, but I have seen people taking this assignment up. There is one organization, not to mention, that few of my friends work with. That organization is Bajaj Auto. Bajaj Auto Finance is one organization which is 100% paperless. They only have cubicles. They don't even have, this comes to our next point, that is non-desk working. They don't even have desk to work on. They have, I mean, when you are working with that organization, you just take your laptop and try to find out whatever place is available on your floor, and you sit there and the whole of your office is working right inside your laptop. This is the kind of technology upgradation we are talking about in future, and that is what exactly comes the concept of smart offices. Cloud computing, it is a fancy term. I think I remember this term coming up somewhere in the mid of year 2005, and since then cloud computing has penetrated our life like anything. We all know how data can be shifted online, how it can be utilized. We'll be discussing it in the future slides. Another feature of or concept of smart office is remote access offices. So when your articles, when your staff, when you are working offline and you are not there at your office, then also you can remotely access your files, your offices, and you can deliver the client the same amount of services that you would have done had the office being open. Access across geography is another thing, that is wherever you're working. I mean, like we implemented cloud computing in our organization, and the happiest of the partners are the ones those who are sitting at Delhi, including Rajender ji, and the partners sitting at Mumbai, because partners are at Mumbai are so and Delhi are so much into traveling that when they travel to distant locations, they are not able to access their offices. They are always in run for ye wali file de dena, wo wali file mail kar dena. But with cloud computing we have become so savvy that we can access anything from anywhere, and that doesn't limit our access to documents from a geographical location. And of course, one more thing, that is collaborative working, which I am again enforcing, because without a team of experts you cannot work now. If you talk about the concept of client management in the times to come, so if we talk about smart offices, the biggest thing, the biggest challenge that comes in front of us is giving client the access to the system. I'll shortly give you a demo of a software that we have managed and that we have developed in-house as to how we will be managing clients through that software. So once you get client into the access of your documentation and into the system, the biggest thing that comes for the client is transparency. Because when you develop a transparent relationship towards client, the client knows what is going on with the assignment and client is very happy. So transparency not only in client management, transparency also in your performance. So what you are doing, when you are doing, let us take an example of this thing. If a bigger assignment is given to you by a client, let us say client says that there were 10 locations that are to be audited by you, let us say a stock audit assignment. So when you talk about that stock audit assignment, the client says these are 10 locations, and he will keep calling you maybe every day as to what is the status of these assignments. But if you manage through an office software or through a client relationship management software, if you give an access to the client,
he will be able to see on what date the audit is done, on what stage is the report preparation there, and on what location what problems are coming. So that way the client becomes very handy as compared to, as related to the information that we are supplying to the client, and he becomes convinced that our stuff is working properly, and a sort of transparency, a dependency kind of a thing, a relationship develops here. Of course, with these things updated, work status of your assignment is updated to the client, and the client is always in the know-how of what state the work is in. This also generates some sort of a behavioral management to the client that gives us some advantage over the others, and a consistent flow of information. And as and when the client wants, he doesn't have to call you. You don't have to ask your staff कि उस assignment का क्या हुआ. It is simply that client will manage a login, client will see what the status of the assignment is, and then eventually he will get back to what status he is in. So this way what happens is that client becomes a part of the system, and when he becomes a part of the system, the so to say the reliance of the client on you, that improves manifold. And this is the best way in which you can maintain or retain a client in the times to come. This is one of the biggest advantage of client management when you're talking about virtual assignments or when you're talking about smart offices. If we talk about staff management has its own advantages. When you're going into smart office, the first thing that you have to do is you will get yourself away from training of every article and every staff member on processes. Generally what happens, we are sending a particular person or a particular staff member to any assignment, we will be having a half hour 1 hour training on the staff as to what should be done in that assignment. And sometimes it so happens that we may forget certain important points or maybe our past experiences. But when you're moving towards smart offices, all the things, all the documents, all the processes of your organization are standardized, and these standardization and the standard operating procedure of various processes will be discussed by the speakers coming after me. So when you're talking about standardization of processes, it becomes very easy for staff to understand, to learn, and the same set of standards is being delivered to the client each time, every time. That is very important in maintaining consistency in the performance. And of course, the training time is reduced manifold. The flow of information is uniform, and the flow of instruction is always uniform. So you don't have to deal with मैंने कल किस article को क्या बोला था या कल के staff member को क्या बोला था. That way what happens is that when you're operating a software into this thing, then whatever assignment you have given, whatever work you have given to a particular person is managed online, and you are able to see on a chart, on a system, as to what the person is doing and what instruction you have given to them. Work management becomes better because now you're able to see which person is doing what, and a real-time monitoring of work in this case can happen. When you've given a certain assignment, let us say a particular kind of a tax return, you have given an article to file, and if he's taking more than 2 hours into that, then you of course will have a check कि एक बंदा है जहां पर 10 रिटर्न 12 रिटर्न फाइल कर रहा है दिन के, और एक बंदा है जो कि 2 ही रिटर्न फाइल कर पा रहा है. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? डज ही नीड ट्रेनिंग, or is it there is he's some involving himself into something else, or he's just wasting time? So resource management and work management and monitoring of work becomes very easy when you're using a handy office tool in the form of a software. एक बहुत important चीज होती है, that is maintenance of a document trail. In our audit assignments and in professional services, since we are certifying and auditing a lot of things, the biggest problem that happens is we forget things. What happened in the last year? What happened the year last to that? And that develops some sort of a lacuna into the system. And if there is something or some query that comes from the years before this, before the running year, then we face the biggest problem, that is we don't have a document trail. We don't have the document trail of working papers. But when you're working online through a CRM software, the instructions posted by you, the queries raised by your staff, the answers given by you, and eventually what were the solutions, those are always documented into the system, and they are there till the end of time. So that gives you certain advantage of a maintenance of a document trail, which always comes handy even in case the organization is having some problem, and in the later stages some authority like maybe Ministry of Corporate Affairs or SEBI asks you some details, then you will be having a document trail to save yourself if something goes south. A work trail is managed,
as to how the work was done, what was done, who supervised what, and who gave particular instructions. These things can be developed when you're using a system like that. A working paper management can be done. The biggest thing that can be done in this case is a uniform hierarchy and unitary instructions. So what happens is that generally an average size firm has 4 to 5 partners. The articles are not uniformly allocated to partners as in the corporate organization, and what happens is that some person has given some work to a particular article or a staff, and the other partner has given some other work to the same staff, and then later on there's a clash, and the problem that is being faced by the lower staff comes big, and then there are problems. So to avoid that, when you're using a CRM kind of a system, a software, then it is always well divided as to what the workload of a particular person is, and what kind of instructions he's operating into, or what kind of assignment that person is having. So you can allocate work to the staff, to the people uniformly and in a more balanced manner, and this always lead to a better workload management, so that you are happy, your assignments are done on time, and of course the staff is happy because the work is divided equally to all. The thing that we were talking about, cloud computing. So what is cloud computing? How does it happen? So this is an advantage. This is something that is given to us. We were thinking of going on cloud for past so many years, but in this COVID-19 pandemic, we realized that this is high time we make some tough calls, and we move to cloud computing. And the biggest advantage that was faced because of the cloud computing was, first thing, that you have a centralized data storage and centralized data access. So wherever you are, you don't have any problem of what to access and what not to access, and you can access the data on a centralized note. You are not dependent upon any particular system. The data is all on cloud. So if the office server is closed, or if there is a power cut in the office, then you will not be able to have an access to the data. These limitations are removed, especially in the medium sized firms. The second problem is that the data access controls. So whenever a person enters into the organization, he will be having, in a normal office setup, he will be having an access to almost all the data that is there in the office. Sometimes this data, these files, these clientele might be something which is not to be given to all the articles. That might come as a problem. But in the times to come, I mean, with a cloud computing kind of a setup, you always can have data access controls, and these access controls give limited access to the client files to the staff, so that you can have better data management. Remote access is one thing we've already discussed in the smart office management. One more important thing is that the possibility of data breaches and theft is eradicated. I mean, I have seen a number of chartered accountants handling this kind of news, that in the data, their server was hacked or their system was hacked, and all the data of all the client files were stolen. And then particular person asked for giving them maybe $1,000 or $2,000, depending upon the size of data, that I will share you my file if you give me so much of amount. This is eradicated when you go on cloud computing, because there is always a backup maintained by your service provider, and this gives you some sort of a backup. If somebody steals your data, still you will be having a backup with you, and the whole data is never lost. One more important advantage of this is a centralized license of softwares. So when we are generally operating on softwares like Tally, the softwares which are running income tax, so generally these softwares don't run on multiple systems. Even if they run, we are using the same license. But when you go to cloud computing, accessing all the softwares through the same server, then the advantage that you have is you have to take just one license of that particular software, and most of the users can operate only on that one license. So the licensing cost is saved substantially when you're going. And last but not the least, work from home is made very easy. So maybe at 6 o'clock in the morning or 10 o'clock in the night, if you want to access something and if you want to work from the confines of your home, or sometimes when the late office working is required and you cannot hold back staff, especially in this COVID pandemic, so that ways work from home becomes easy, and you can get your assignments done even sitting at the comfort of your homes. There's a software that I was telling you about. So if you talk about this software basically consists of say what kind of software we can go for. So the softwares can be used for remote audit tools. As remote audit tools, the softwares we have to adopt is virtual meeting tools. The software that we have is
used for data access and data management and virtual CRM tools. All these kind of softwares we have to acquaint ourselves with, so that we can go for a smart office or a virtual office in the times to come, which is a demand of the time. And it's, I mean, if we talk about this virtual CRM software, I will show you just a glimpse of what this software looks like that we have developed in house. So this is a software. I mean, we named it after our organization only. So Spark Team Management System is the software. This is a kind of software which is very easy and very handy for any firm which is having a mid-size clientele. So this, I mean, if we talk about the clientele, this is how typically the dashboard of this software will look like. So there will be a list of clients, and software will also give you, once you log in, there are few features. One of the important feature is login and logout. So you can very well manage when a staff has logged into the system and when a staff has logged out, so that the work, that is the login time, attendance of the staff, can be managed through this software only. This software, another thing that we face a problem with is we somehow shuffle our tasks and we forget some important things. So this software is equipped with a to-do list. So you can simply add a task here, and when you add, it will reflect on your to-do list. So whenever you are going on the dashboard, the next thing that you have is what you have to do, what is the importance, and you can also set the hierarchy of the hierarchy on the to-do list, so that the most important tasks are reflected on the top, and then later on you can manage it accordingly. This is a list of clientele. If you want to go to any client from here, you can definitely go. This is the admin. Admin may, if you talk about departments, like in any firm there are multiple departments. So departments can be classified as income tax, GST, corporate audit, maybe banking. So various departments can have access to these, and all the departments will have an individual. This is for this user, they can name their own departments according to their own firm size. This is a demo kind of a data that we have filled in here. So you manage your own departments, and the data related to each of the department will go separately to other things. There is a list of tasks that is available. So when you can say the list of tasks, then these tasks might include various things, like you might want to want I mean might to want to file GST return, want to go for GST audits, corporate audits that may be in the nature of statutory audits, internal audits. Bank, you can go for concurrent audits, stock audits. So this is just a demo data. So you can manage or maintain your assignments here. And when these assignments are there, there are certain things for the clients that we do which are non-billable. So if you are doing some non-billable activity like studying a circular, doing some research, like what we are doing right now, as in the form of this seminar of Spark Foundation. So this is again a non-billable activity. Here in this software, if you can go for, then you will manage the users here. So the users will have various locations depending upon what you are doing or what kind of users. You can manage your user, you can create your users for various branches, and all the users will be having separate mobile numbers, separate email IDs. So the things will move on in this case. Then comes the important part. I mean, when you are talking about client, you manage a client list. The most important part here is the task. When you are making a task, when you have already defined the task in the admin panel, now here what you can do is you can simply make a task and assign that task to a particular person. So in this case, this is a demo data, like the client name is, let us say, Bank of Baroda. The concurrent audit is the assignment. So if we talk about the task name, that is April 20th concurrent audit. So start date is 1st of July, 10th of July, we targeted the date of completion. These are the users to which it is allotted, and the status is still open. It is assigned by Arora ji here. So this shows the whole status of any task which is to be conducted, and by just going to the task list, you can find out which tasks are not initiated, which tasks are open, which tasks are closed. And by non-initiated, it is those tasks, there is a classification in the task. The task may be of a recurring nature or maybe of a non-recurring nature. Let us say if the task is of monthly recurring nature, then you can simply put up a recurring nature to that task. And in this case, what happens is that the task will keep on coming every month. It will initiate automatically. And in the times to come, if you don't close it,
then the task will be standing there and will be reflecting in your task list. And that is where you can manage into various tasks and various clients easily, so that in the times to come nothing is missed and everything is very well documented into your system. So that generally what happens is that we are I mean, this software is basically to manage things, because we are running on cell phones. Most of us are doing that, and we prioritize our work according to the priority of the client. So if the client calls us first, we make it a point कि boss आज इस client का call आया है, तो सबसे पहले हमें इस client को treat करना है. This is what generally happens. And the client keeps following us, so जो client पहले follow up करता है उसका काम हम पहले करते हैं, but we are not driven by ourselves most of the times. So this task management tool is basically to handle all these problems, address all these problems, so that you can work your office smoothly. And this basically, the demo of this thing would take around 2 hours for us to broadcast. But yes, in short, this is a thing that will lead you to a better and efficient task management and client management. And of course, if you are given if you give this login tool to client as well, the client will be having a limited access only as to the working on the task and whatever state the task in. So this way the office virtually can be managed properly, and this will give you what details you have done, what are left. There is of course a window of billings. So when the task is completed, the record will be generated automatically here, and then you will have to write that what date you rose the bill and what date the realization was done. So sort of reconciliation of billing from the clients is also done, क्योंकि हम में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम तो कर देते हैं, बिलिंग भूल जाते हैं. So billing के लिए भी ये सॉफ्टवेयर आपको रिमाइंड करेगा, and things will become easy. There are certain things which are in the form of reports. So when you talk about reports, so there will be a report generated on so many matrices and so many factors, which gives you a user wise report, which give you a status wise report, which give you a staff wise report कि कौन से स्टाफ ने कितना काम किया, कितने घंटे का काम किया है. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो स्टाफ के साथ आता है कि समटाइम्स द स्टाफ क्लेम्स रिएम्बर्समेंट एंड वी फॉरगेट कि कितना रिएम्बर्समेंट हमें उसको स्टाफ को देना है. सो दैट अमाउंट ऑफ रिएम्बर्समेंट विल आल्सो बी पुट अप इन दिस. सो ऑल द थिंग्स, ऑल योर वर्किंग ऑफ द ऑफिस विल बी मैनेज्ड थ्रू दिस सॉफ्टवेयर. एंड स्पेशली इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अ स्मार्ट ऑफिस, आई वुड से दिस सॉफ्टवेयर इज अ मस्ट. So with this thing, I would end my session here, and I would get back to, rather I would say that I would hand it over back to Arora ji, and if there are any questions from anyone, they can very well ask. I'll be happy to answer that. राजिंदर जी, आपका शायद माइक म्यूट है. सॉरी. थैंक यू सर, आपका बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा और बहुत ही यूजफुल टूल आपने बताया हमारे व्यूअर्स को. और सर एक सवाल प्रेमनाथ जी हैं हैदराबाद से, वो पूछ रहे हैं, ही इज आस्किंग दैट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट फ्रॉम जोहो. Sir, actually Zoho is basically a billing and accounting software. And what software we are demonstrating is a software exclusively for CA firms. So CA firm में आपका टास्क मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट आप कैसे कर सकें, ये सॉफ्टवेयर उससे रिलेटेड है और उस चीज में आपकी हेल्प करता है. और जोहो जो है वो आपकी बैलेंस शीट बनाने में, ऑनलाइन अकाउंटिंग करने में और दूसरी चीजों में हेल्प करेगा. सो दीज softwares are totally different. And Zoho mein, of course, I don't see any task management feature. Zoho is only accounting. So these two things are different. थैंक यू सर. आई होप प्रेमनाथ जी को काफी अच्छा इनपुट मिला होगा इसके ऊपर, और मैं बाकी सबको भी उम्मीद करता हूं कि जो हम सब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ये बड़ा कॉमन इश्यूज हैं कि हम लोग काम तो करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं रख पाते. अब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम काम कर चुके होते हैं और फिर हमें ये नहीं पता होता कि हमने उस पर किस लेवल तक काम कर दिया और कौन काम कर रहा था उस पे, किसी टास्क पे, और हम उसको रीस्टार्ट कर देते हैं. फिर जैसे सुदीप जी ने कहा, भी काम तो कर दिया लेकिन बिलिंग भूल गए. अब बिलिंग नहीं भूल गए तो फिर काम क्यों किया? मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद बिलिंग जो है वो 1 रुपए की है या 1 करोड़ रुपए की है. बिलिंग हैज टू बी देयर, अदरवाइज बिल नहीं है तो फिर हमने काम क्यों किया? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को ऑफिस को वर्चुअल होने के लिए सबसे पहला तो ये
एक ऑफिस मैनेजमेंट टूल हमें ऐसा चाहिए जो कि हमारे पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप जी। मैं मतलब जानता हूँ कि इंदौर जो है वो आपके मजबूत कंधों पर, एक इवन सिर्फ इंदौर ही नहीं पूरा भारत आपके मजबूत कंधों पर टिका हुआ है, और हम सब आपकी तरफ देखते हैं जब भी हमें कोई समस्या होती है with respect to finances, with respect to technology, with respect to other issues. So thank you very much Sudeep ji for this discussion. Now I would thank you so much. request हमारे अगले स्पीकर जो हैं वो हैं जगजीत सिंह जग्स। ये हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और मैं इनका एक ब्रीफ प्रोफाइल आपके सामने बताना चाहूंगा कि इन्होंने ग्रेजुएशन किया 98 में और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने 2008 में, और फिर इन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स भी किया ऑडिट ऑफ बैंक्स का, कंकरेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स का, फिर फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फिर जीएसटी का सर्टिफिकेशन कोर्स भी इन्होंने किया हुआ है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी इन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। और मैं इनसे जब ये 2008 में क्वालिफाई हुए थे मैं तभी इनसे मिला था, और आज लगभग 12 साल हो गए हैं हम लोगों को साथ में। और आप बड़ा एक यूनिक सा आज कॉम्बिनेशन भी देख रहे होंगे सारे व्यूअर्स की, 4 पैनलिस्ट अगर नजर आ रहे हैं तो 4 में से 3 जो है वो पगड़ी वाले हैं। तो बट ये कोई प्लान चीज नहीं है, ये बड़ा स्पॉन्टेनियस और आउट ऑफ आई वुड से बड़ा नेचुरल रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने सोच कर ही कुछ किया था। तो जब मेरे दिमाग में, क्योंकि आप कभी सर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि पीपल एंड लिसनर्स आर मोर बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज इन द हेड रेदर देन व्हाट इज ऑन इट। ऑन दी हेड नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, यही बोलने ही वाला था मैं कि इनफैक्ट जब टॉपिक की सोच हमने डाली कि हमने किनको बुलाना है, तो ऑटोमेटिकली हम जीरो डाउन जगजीत और अंगद पर करें। और इनफैक्ट अंगद से तो मैं ये कह रहा था कि भी अंगद मैंने तुम्हारा नाम भी लिख लिया है और अब तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास इस समय का टाइम है या नहीं है, बट आई हैव ऑलरेडी रिटन योर नेम फॉर दिस थिंग। तो नाउ जगजीत जी 2008 में हमारे साथ मिले थे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जगजीत सिंह जग्स, और इनफैक्ट जीएमसीएस वगैरह भी लेते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स में बोलते हैं। अब मैं स्ट्रेट अवे उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और जो आगे की इसमें जो इश्यूज हैं हमारे आज के टॉपिक के, कि अपने ऑफिस को कोई भी प्रोफेशनल वर्चुअली कैसे रन कर सकता है, उसमें हमारी जो है हमारा रास्ता साफ करें, हमारा पथ प्रकट करें। Jagjit Singh Jags. Thank you, sir. Thank you, Rajender sir, the Vice President of this Spark Foundation, and obviously the last speaker, Sudeep Saxena ji, next speaker, Angad Pal Singh ji, and obviously the moderator of this program, Ashish Mittal ji, and all the the viewer of this program. So very good evening, everyone. So as mentioned by Sudeep ji, so about the office management, and something was it something mentioned about the client management, and definitely he mentioned one point related to the SOP like the standard operating procedures. So that is very, very important. So when you are going to organize your office, your business, like the on the virtual, you are shifting your office from the manual to the virtual, or you have to maintain, you have to draft your SOP first. So the 3 topic given by this Spark Foundation to me. The very first one is like the tips for the SOP, and the second one is I will talk about the accounting software for the as a audit tools, and the third one is like the IT tools for the virtual meeting. So 3 topics, all the 3 topics are very, very important and very lengthy topic. But the time duration is just 30 minutes, so I have to complete my presentation within this 30 minutes. So it's very difficult for me, but I will try to complete these topics, like the important parts which I have mentioned in my presentation. So I will just mention the important area of these 3 topics. So Ashish ji, please allow me to share my screen, please. Okay. Is my screen available to everyone? Ashish ji, yes, screen. now it is. Yes, it yes. is now. Thank you. So before start my first slide, so we have to understand what is this standard operating procedure.
So when we like visit to one showroom, so from the entrance into that showroom, or we can say when we enter into the hotel, when we visit to the hotel, like the 5-star hotel, 4-star hotel, any business, any showroom, so any office, when we enter into that particular premises, from the entrance to the exit from that particular premises, so the each and every employee of that organization, whether we talk about the hotel, whether we talk about the office, whether we talk about the bank, or we talk about any like the big brand showroom, like showroom of the very big brand, in the market. So every employee in that particular showroom or the hotels, so having their responsibility, having their duties, and every duty and the responsibility actually drafted, properly drafted, and basically the pass from the authority. And it is nothing, just a framework of the like the big task into small parts of the task. And that is in when we consolidate each and every activity of the employees in a drafting manner in a particular like the system manual, so that is called the standard operating procedure of that concern. So what is that? So, and what are the tips to generate this SOP? So first understand what is SOP. So I will just read the highlighted point in my presentation. The standard operating procedures are written step-by-step instructions. So basically it's talk about the instructions given by the senior. So as we know, when a professional person join a big industry like the big company or the big any office, any organization, so from the day one, he never start his working. Even the employer of the office never give the work to that particular person. So first design, first basically decide the job profile of that person, and then put that person into the training module, the system training, the system manual, to understand that system manual first. Whether the system, the understanding of the system manual will take 5 days, 10 days, 15 days, 1 month, 3 months. But after understanding the system manual means the SOP, the after understanding the SOP, that person is authorized, is eligible, is right to start that particular work in that particular organization. So what is mentioned in the SOP is are the written step-by-step instructions. So how to perform a routine activities, that is everything mentioned in the SOP, and should complete them in the exact same way as decided by the like the senior person, the management of the company, the management of the organization. So business can be, so that the business can be remain consistent. So basically SOP help maintain safety and efficiency. So what are the important point? Whether we talk about the production department, operation department, sales department, customer service department, employee training, if we talk about the employee training, if we talk about the legal department like the legal organization and the financial. So in each and everywhere, so definitely there is a requirement of SOP. And without having the SOP, without having the system manual in that organization, we cannot say that that person is responsible for such work and that person is responsible for another work. So when we understand each and every activity of the organization, how to do that activity, so everything is written in the system manual of that company. So in consolidate, we can say that written document is called SOP, the standard operation procedure. A standard operating procedure should never be difficult to read. So while drafting that SOP, that should not be like very difficult to read. It should be brief, easy to understand, so that every employee of the organization can understand in a proper manner in the same interpretation, with the same interpretation, and contain action step, simple follow, and should clearly outline, inform the employee of every safety concern. So that SOP must be clearly mentioned, simply briefly explain, simply mention, so that the employee of the organization who's joining that organization to start that working with that organization can understand the SOP of that organization. And in the last para, should be the basic for training and any employee to be updated every year. So this SOP must be updated every year. It should not be like once the SOP drafted, so it will be applied to all the employee of that company and never be updated. So it must be updated every year, so that what are the the loopholes, what are the
like we can say like the gap area in the SOP. So we can fill that gaps basically to make that SOP more effective and efficient. So next, so what are the needs of this SOP? So basically first, the save the time and the money. So when the same task is completed in many different way, definitely it will always take a longer time to complete. But when you have, as mentioned by Sudeep ji, okay, while that why that employee is taking filing two returns only of the GST, and the another employee of the same company of the same the department is filing GST return more than two. So what are the weakness, what are the what are the gaps in there? So definitely, so that work must be complete in a proper time as mentioned in the SOP. So and the streamline the process so that employee can accomplish more in the less time. And what is second? Consistency. So every person constantly work in that organization. And the good communication, when you have a proper SOP in the organization, there is a good communication, accountable of the employee. So when there is an employee in the organization, and after hearing, after learning, after understanding each and every SOP of that the organization, so that person can be can be accountable for that particular job, because that job must be completed in 1 day, must be completed in 2 days, is mentioned in the SOP that must be completed in 1 day. And if it is not completed by that person will be responsible according to the SOP. So efficient work environment. So if you want to create an efficient and the effective environment in your organization, then must draft this SOP first. Now, this is the important area related to the topic given by the Spark Foundation to me. So tips for the designing SOP. So very first thing is develop a list of your business process. So what are the processes in your business? So when when we were a student like in the CA Foundation, or like the CA Inter, so there was one topic, process accounting, and everyone we know that the output of first process will become the input of the second process account. So develop a list of your business process. After finishing this process, the process of the second person will start. After end of this the process of second person, the process of the third person will start. So each and every activity must be in a written. So develop a list of your business processes. What are the business processes in your organization? Second, the plan the process. So what are the process that must be planned? You will need to decide a format for your process. Do you want it to be a step-by-step guide or a workflow diagram? Workflow diagram, as I mentioned earlier, the process account, the output of process account first will become the input of the process account second. So must be draft each and everything in a workflow diagram. Talk with the employees. So without talk with the employees, SOP cannot be successful in that organization. If you want to make effective and efficient SOP in your organization, then first talk with the employees, because employee is that person who will execute each and every step of this SOP into your business. Write and review the process. You should also determine who will be responsible for the oversight and the maintenance of this SOP. So keep in mind that all your standard operating procedure should read the same way while still distinctly describing the function of each and every of your business area of your business. So must be write and review the process. So day by day you must revise, must review the process. Even after 1 year, when you are updating your SOP, so definitely every day try to read and review that process, so that if there is any need for the updation, is there any need for the mold that basically the part of the SOP, then you have to mold, you have to modify for the betterment of the organization. Then maintain the process. It to be remain relevant and useful, you must maintain and update it at least once in a year. So it's very important to maintain that process. When you understand the process, the part of the SOP is at the good level, so please maintain that. If you are looking for the better result, if you are looking for the result which is mentioned in the business policy, which is mentioned according to the SOP of the organization. Result of the SOP. So this is the paragraph
which through this you can understand. So what are the benefit of this SOP? जगजीत जी, वी आर रनिंग लिटिल लेट, तो इसलिए मैं Okay, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो आईटी टूल्स वाले इश्यूज हैं वो आप और ले लें सर साथ में, इसको definitely आप भले ही थोड़ा सा। I'm running very fast. I'm running very fast to नहीं complete सर, आप बिल्कुल यू this. आर रनिंग फास्ट, बट मेरे हिसाब से आईटी टूल्स पर ज्यादा आप फोकस डालें सर, क्योंकि ऑलरेडी टाइम जो है उस हिसाब से है। I'm leaving this slide. I'm moving to it, right? So these are the जी tips for running SOP. So first, understanding the framework of the SOP. So that framework requires the title, department, date, as mentioned by Sudeep. You know, the every software having a like the subtitle and the subtitle. You know, you have to make that information. The title, purchase of goods. If you are going to design this SOP for the purchase department, so the title, department, date, and ID, purpose, procedure, involvement of the concerned department. As I mentioned, involvement of the employee. So now there must be involvement of the concerned department to make the SOP for that particular department. So purpose of the SOP must be, desire to create this SOP must be fulfilled. Scope of the SOP with their needs. So you must know the starting and the end point of the in this regard. So what would be the the starting point and what would be the end point? That is very difficult to understand. That is very difficult. So while drafting this SOP, but you have to create a scope of every aspect of this organization. Consistency. Be clear and concise about this. Working must be clear, simple, and short, and highlight the importance of this SOP. Appropriate coding. So coding is very much important and required. So must always use appropriate symbol for the proper understanding of the concern, the person for this SOP purpose. And chain of steps, as I mentioned earlier, must be coordinate with each other. So the chain of this SOP must be clearly defined in the like the documentation. The individual or the combination of these must aware about the proper sequence of the step involved in the SOP to make it more effective and efficient. So access. So next one, a matrix to judge of the SOP. We need to understand how it is performing so that we can optimize it at the optimum level. If the organization is looking for to achieve their objective at the optimum level, so definitely it must be to fulfill the optimized level of this SOP. Testing of the SOP. The testing is very much required. Testing results are favorable with the comparison of the old and the new. When we are comparing with the new SOP with the old, then must be satisfied. The testing is much required. And comparing, it must be cost effective, effectiveness, efficiency, easy to understand, so that we can implement that SOP in the organization. And if we talk about the risk assessment, that is very, very important. Risk assessment is an important part of finalizing and any project, whether you have actual real human being doing something under your direction. So risk assessment is also important. That is a tips for the designing SOP. Workflow diagram, as I mentioned, must be like in a flow manner and helping employees understand their role. A flow diagram provides employee with the visual way of understanding what is being asked of them and helping make sure that your employee understand their position within a broader whole makes the process work better and improve employees accountability. As I mentioned, that person must be accountable, so must be in the SOP and send SOP to the authority for the approval purpose. When you draft the SOP, that must be authorized, that must be sent to the authority for the approval. A senior authority, if get satisfied with the new or the amend SOP, then they will give approval for the implementation of this SOP in the organization. Finalization and implement the SOP. So after getting approval from the authority, must be implemented, and the very important ISO standard. So if you are wanting to make sure your SOP are truly and the best they can be, adhere them to the ISO standard. So by doing so, you are internally and externally certifying them as a reliable, high quality, and effective. These are the basically the tips for designing the SOP. So what are the things required while drafting this SOP? So these are the tips to understand. So now the accounting software, the second part, accounting software as an audit tool. The very first one is accounting software are become a very essential component of
any modern, business. So very much required this accounting software as an audit. Why? Because it increase the processing time, effective and efficient, ease of the entry and task automation, and reduce of human errors, enhance reporting, integration across system and cloud based as mentioned by Sudeep ji. So basically in the market there are some, the accounting softwares are available which help to the which work like as an like the audit tools. So definitely it is increase the like the processing time. So definitely you are saving your time, effective, cost effective and the efficient manner, ease of the entry. We can easily enter like the into that like the accounting software, and task automation automatically, the manual working of the employee is over. So now the software will task automation is there, that part is there. So reduction of the human error. So basically after using this accounting software as an audit tool, so the error, the involvement of the error or the possibility of the error will reduce. Enhance and analysis capability and integration across the system. The second one is inventory management tool. Inventory management software is another tool to help growing organization realize efficiency. A well-designed inventory management system will also aid in the the preparing your company for the business audit. So growing organization are often tasked, with the managing inventory data across multiple systems, some, the for the listing product and the other of the processing order inputting data. So when you are using inventory management system like the software in the company, so what you are basically doing, you are basically saving your time, simplification of inventory process, increase efficiency, error reduction, cost effective, and better stock management. While there are too much transaction in the stock, the input and the output and the processing, so there is a movement in the stock, so you can save your time, you can save your error, you can work at the like the efficient manner or effective manner, so by using this inventory management tools. This, you know these are the benefit basically in the as a audit tool like the accounting software. One is efficient, like the sophisticated full view of the inventory management with built in the financial analytic tools. Second one is efficiency and the cost reduction in the sales and the ordering. Definitely, when we are moving, we are buying any goods and moving in a limited time period. So definitely there is a reduction in the cost of storage. So definitely there would be a profitability in that organization. Efficient and the cost reduction and support for the online business owner, offering more accuracy and the consistency. As we know, like the Amazon, like the other online, the company in the market, those are doing this e-commerce business. So definitely, if they are maintaining their accounting software or their inventory software as an audit tool, so definitely there is a help for reducing that cost and work at the accuracy and the consistency level. Integrating inventory process that communicate with the data perform and supply chain partners, and integration of the cloud-based accounting. So now, as mentioned by Sudeep in the last presentation, in the previous presentation, that cloud-based accounting is very, very important for saving the time, for saving the cost of the organization, and help for the available data online at every place, everywhere in the world, we can access that data. So employee benefit includes save IT resources, so the time of the developing and the managing multiple internal systems, offer enhanced accounting capability to balance book, develop report, and set sale reminder with the added benefit of the real time inventory tracking. So these are the basically some benefits while using this inventory system or the accounting system as an audit tool. So enhancing customer services also. So reducing the warehouse cost, as I mentioned earlier, a simple display relationship between the like the inventory management and the finance. So decision to buy this software, to decide to buy accounting and inventory management software is a big task because it's very difficult to take a decision about this accounting and the inventory system. So what system is give the benefit to the organization for this particular accounting and inventory management? So it's a very difficult, but yes, require both time and the money. That is much required because time. Jagjit, I'm afraid we are running out of time.
Yes, sir. But last slide, and after that I will start this that the last one, the virtual meeting. 5-7 minutes, sir, we have for this thing. Okay, no problem, sir. So while deciding, so which accounting software and the inventory, whether accounting or the inventory software is important. So we must understand that software must be flexibility, must having the flexibility, transparency, processing, and the real-time reporting. So these are the main component required while deciding. So which software is very important for the organization. So this is the IT tools for the virtual meeting. So the time constraint is there. That is why I'm moving fast without any further explanation. So IT tools, while these are the IT tools for the virtual meeting. So if you want to do this virtual meeting, so these are the IT tools. The very first one is Slack. This is the software. So the team messaging tools. So all type of communication that is possible to this through this Slack software together seamlessly, eliminating the need of the long email thread. So now when we are communicating with the other employee or the senior, like the managing director of the company, we are just mailing, we are just creating a mail and the trail of this mail. So without doing that, use that Slack, that the save your 49% reduction in the internal mail, reduce that mail and helping them the streamline work and become more productive. Next. Join me. This is another, it is a versatile, easy to use program, can be loaded onto the desktop computer, laptop, tablet, smartphone, and join me allow, the 10 individual to view your, so there is a limit of 10 individual, and similarly at the same time, the fostering collaboration for idea generation, sales demos, and the presentations are there. So this software is very useful, but again, there is a limitation. So, and very costly. As I mentioned in that, the monthly is the $25. Dropbox. नहीं जगजीत जी, बहुत ज्यादा कॉस्टली थोड़ा ना, $25 महीना. So that is not, I'm not saying that अगर $25. हम सारी मीटिंग्स इससे करना शुरू करते हैं, जैसे आप भी अभी मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आप अभी अपने क्लाइंट के साथ एक जूम मीटिंग कर रहे थे या कोई सॉफ्टवेयर से मीट कर रहे थे, Yes, तो अगर yes, हम yes. सारी मीटिंग्स, क्योंकि आने वाले दिनों में अब जो है यही तो नेक्स्ट बिग थिंग होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 5 मिनट सिर्फ सर हमें ये बताइए, अदर देन जूम और कौन कौन से, जैसे ज्वाइन मी आपने बताया, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, एक Yes, जियो sir. मीट आया है, वो अभी रिसेंटली उसके बारे में पता लग रहा है, तो ऐसे Yes, कौन sir. कौन से टूल्स हैं सर जो हम, क्योंकि अब हमें लगता है कि आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल हम लोगों को अपना फिजिकल कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग सब एक दूसरे को सेव कर पाएंगे, लेकिन काम तो करना है, इकोनॉमिक Yes. एक्टिविटीज भी चलानी है, धंधे So भी these चलने हैं, मीटिंग्स भी होनी है, फेस टू फेस बात भी होनी है, तो ऐसे टूल्स जो बिजनेस यूज कर सके. अब जैसे मान लीजिए अगर आप $20 की बात करते हैं, तो $20 इज अराउंड 1500 a month, and Yes, if it yes. is unlimited usage, more than 50, 100 But, people can sir, join, then but sir, while deciding, when you are going to decide, what kind of softwares are available, when you compare with the other software, so definitely there is like if we talk about the cost of this per month is $20 or the $25 monthly. So that is the cost. When we compare with the other software, the functions, the facility, or some हाँ, बस वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वैसे अदरवाइज ऑल्सो मुझे नहीं लगता कि $20-25 महीना बहुत बड़ी कॉस्ट होगी, और लेकिन अगर फिर भी और भी कोई बेटर है और कम कॉस्ट में, तो ऑफ कोर्स एनीबॉडी वुड लाइक टू गो दैट. आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. Sir, price and the cost is not only important. We have to understand the other functioning, the facility given by that software. So according to that, definitely we know that the Zoom is very, cheapest in the market. But due to the Supreme Court decision and the some other, some other direction from सर हमारे जगजीत जी, हमारे व्यूअर्स की डिमांड आ रही है कि हम थोड़ा सा हिंदी में भी बोल दें सर. Okay, no problem, sir. No problem, sir. Right? So join me. Yes, definitely. So next, Dropbox. So अगर Dropbox की बात करें, so the Dropbox को founder, so no, the Drew की बात करते हैं, जिन्होंने इसको बनाया, the concept in 2007. It's a very simple and easy to use, but offering storage and file synchronization. So basically, Dropbox is just like a, the application is there where you can drop your data.
so that you can access that data all over the world from any the like the from the computer, from the the laptop, or from this the mobile. You can access that. So your team can access this material from anywhere, as a material will automatically show up. Basically जो ये सॉफ्ट जो बनाया गया था ड्रॉप बॉक्स, ये बेसिकली डेटा को कैरी करना, डेटा को पेन ड्राइव में डालना, डेटा को और ज्यादा रिस्की बनाना कि कहीं वो पेन ड्राइव कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, so इसको क्लाउड पे रखा जाए. So this facility is available, and this tool is particularly helpful for sharing the large file and the backup. So this is the purpose, and the limit is 200 GB per day. So that is what like the, if you understand, so the basic account features 2 GB of a free online storage, and 20 GB for the traffic per day is free. So that 20 GB is free. If you want to use this Dropbox for the like the storage of data, you can use that. The 20 GB is free per day. So user can update their accounts to provide more capacity for pro and the business accounts, and that are the basically the other the like the applications available at this the next level of this Dropbox. So the limit is 200 GB per day. If we go and buy that the pro and the business account, so definitely our storage capacity can be increased per day. But obviously we have to pay something else. Google Drive. So Google Drive is another like the drive option for the storage of data. So definitely and that allow user to store file in the cloud. So again, we can share, we can access that data from anywhere, and file and edit option is also there. So spreadsheet, presentation, Google Photos, and the other the audio files we can easily upload, download, even we can edit through this Google Drive system. Even in our office we are using Google Drive. So basically when the other one employee is working and the saving data on the Google Drive, so other employee use same data and edit and more modify that data and save that, so that the third person can easily see the updated data that is available for everyone. So all changes are automatically saved. User can access the document anywhere at any time from their smartphone, tablet, and computer, as I mentioned. So everybody knows the limit of this free the space available in this Google Drive, that is a 15 GB, that is a free space. But if you want to buy another, if you are looking for more storage, so definitely you have to buy from the Google Drive. FaceTime is also a video chatting tools for the Apple user. This is only available for the Apple user, and for the a user can make video calls over Wi-Fi from their phone, iPhone, iPad, iTouch, and the Mac, the desktop or the laptop, or some other someone else using camera on the device. Availability over the cellular phone depends on the carrier. So basically this FaceTime is only for the Apple user only. So this is not possible for the other user, like those are using not a Apple application, or the like the this the software, or the like the phone is not related to IPs. They are using some other Nokia and other phones of the company, so they cannot use this FaceTime. But that facility is also available on the, I think so, Android phone also. So that is mentioned in the, so FaceTime is incompatible with the non-Apple devices. Alternative for the Android user include Google Hangout, Skype, and the Viber. So that is, FaceTime is only available for the Apple user. Skype is another software basically for the video calling. So many considered it's a granddaddy of the video conferencing tool. It's very the old software available for the video call. So, and millions use of the the tools are daily basis to the network with the colleague around the world, and the app can be loaded onto smartphone. So that is compatible with every device like the smartphone, computer, or even in the television will support it. So free HD video calls can be made and the broadcast to the group of up to 25 individuals. So that is the limit of the Skype. So that is why the Skype is not running like very familiar for everyone. So that is why the market captured by the Zoom only, because Zoom is very cheapest rate, and the access, even the quality of video is good. So Skype can also be used for the group chat, photo, and the file transfer. So the all size can be transmitted using the tool.
But again, the file sharing is very slow in the Skype. So that is a these are the basically drawback of the Skype. Otherwise, video call is very good. Sorry to intervene, sir, but anything which pertains to China, relating to China, we should not use that. That is why I'm saying, Supreme Court has taken decision, again the Chinese application or all that. So that is why I'm not recommending Zoom software to everyone. Periscope. So Periscope is a live streaming app for the the Apple user as well as the Android user. So a live video from there, like the phone in real time. Planner. So Planner is a good option in this Periscope because Planner could use it for a live interview that is then streamed to like the Twitter during the conference, and the planner could give those who could not attend the event a task of what they missed. So basically, Planner is another the application of this Periscope software, so which we can use what we have missed in the earlier period. So now again the Zoom is there. So I will not talk about the Zoom, or should I talk? Free Don't talk conference. about Zoom. Don't talk about Zoom, sir. So that is why I left that. So free conference call provide free online teleconferencing for up to 25 people. So again, there is a limit of 25 people. We can make a teleconferencing within the 25 people, and call can be recorded, shared, and saved to be here later on demand. So free international services offered to 58 countries, making hosting a global conference call a breeze. Basically, in the big industry, if you want to make a like the conference, so that the limitation of 25% is possible. 25 people go for this. Even while doing this, the conferencing meeting wall can be customized with the headshot or the logo. The company logo can be, the place there, and the app for the mobile Apple as well as the Android device also available. GroupMe. GroupMe is a free mobile messaging app. Planner can be used, as I mentioned earlier in the the previous slide. The planner can be used to coordinate private chat among workers. It works on the all the device platform. A user can chat on the go or from their office computer or from tablet at home. It can be incorporated picture, emojis, and the video. So definitely images, video can be shared while doing this chat directly. So this is the last. I hope this is the last one. No, I have another one. A WebEx also. So go to meeting, go to webinar. So nowadays, the most of the chartered accountant, most of the company and the the other professional, they are using this software. So Steam, we are using this StreamYard also. So I have not mentioned that StreamYard into this presentation. So company can significantly decrease their cost using meeting webinar tools. Go Meeting, Go Webinar. It's a flexible, professional, and reliable platform used by 3 million users around the world per month. Some of the attraction of these tools are basically 24 by 7 live support, and the fact that the number of online meeting a company can hold each month is unlimited. So privacy is protected. So that is why we are moving from Zoom to this GoToWebinar or the StreamYard purpose, and the cost is a little bit high, so $49 per month. But the quality is good. Another costly software in the market is WebEx. So it's a software, basically produced by the global leader Cisco. It's used by many Fortune 500 companies, and the company stated that 51 million people per month attend a WebEx meeting. A free version allow user to meet and work with two other people. So the premium version offer, the platform ranging from $24 per month for up to 8 people. So again, WebEx is also a costly software available in the market for the meeting purpose because the limitation of 8% and the cost is $24 to $69 per month up to 100. If we want to use 100 people meeting, so definitely we have to pay 69 per month a dollar amount is. So this is the last one, sir. Is there any question, sir? Uh, Thank you, Jagjit ji.
Actually, I run very fast. I run very fast due to the time constraint. Otherwise, if I take every slide and take 5 minutes, so definitely I can explain more. So that is why I'm running very fast. नहीं नहीं, आपने सर बाकी अभी भी अच्छा एक्सप्लेन किया है, ऐसी बात नहीं है सर, है ना। और काफी बढ़िया था। और बस जस्ट मैं 1 मिनट लूंगा व्यूअर्स का यहाँ पर। दोस्तों, जो एसओपी और आईटी टूल्स और वर्चुअल मीटिंग्स की बात जगजीत जी ने की है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अगर हम अपने ऑफिसेस को एक्चुअली वर्चुअली मैनेज करना चाहते हैं, एसओपी कहाँ हमारी मदद करेगा? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टुडे, माय डियर फ्रेंड्स। एज ही हैज राइटली सेड that SOPs, standardized operating procedures, achieve many functions, including it increases the control over the activity, it brings uniformity in the activity, chances of error reduces significantly into the activity, then the predetermined pattern and the result is also being ensured. The only demerit, मतलब एक ही परेशानी इस पूरे एसओपी सिस्टम की होती है, और वो होती है इट इज डिवॉइड ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें क्रिएटिविटी नहीं है। हर चीज का एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि जूनियर लेवल पे और मिडिल लेवल पे ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शंस में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी हमारे ऑब्जेक्टिव्स को डिसमिल कर देती है, और हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर पहुंचना होता है। हायर लेवल पे क्रिएटिविटी जरूरी होती है, क्योंकि द पीपल हु आर इनटू द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की आर इन्वॉल्वड इनटू विजुअलाइजिंग वेरियस अदर प्रोसीजर्स, ऑपरेशंस, टारगेट्स, पैटर्न्स, एसओपीज। तो उनमें क्रिएटिविटी होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम यहाँ पर है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखता हूँ, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं कहूंगा कि 80% एक्टिविटीज के लिए हमारे पास एसओपी है। तो आज कोई भी नया, और देखिए इसका जब सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल याद दिलाता हूँ। मेरे ट्रेनिंग टाइम में जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की, तो मैं देखता था कि जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे से भी ऑफकोर्स मेरे को जाते ही पहले क्या पकड़ा दिया गया, एक रजिस्टर पकड़ा दिया गया जिसमें बहुत सारे स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का प्रिंट लगा हुआ था, और उन सबको पढ़कर मतलब 1-2 दिन मैंने सिर्फ यही किया कि मैंने वो सारे एसओपीज, मैं एक सीए फर्म की बात कर रहा हूँ जहां पर मैंने ट्रेनिंग की थी अपनी। तो पहले 2 दिन जो मेरी ट्रेनिंग थी, वो सिर्फ मुझे ये कहा गया कि भैया ये एसओपीज हैं, इस स्थिति में ये करना है, इस स्थिति में ये करना है, इस स्थिति में ये करना है, इसको पढ़ लो और नीचे साइन कर दो कि हाँ जी मैंने पढ़ लिया और मैं इसी तरह से फॉलो करूंगा इसको, और अगर इसके अगर मैं डेविएशन में जाता हूं तो फिर मेरे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। मैं सीए फर्म की बात कर रहा हूं। आप इससे स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट कर देंगे, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट कर देंगे, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस बात को कंट्रोल करना कि जैसा काम आप चाहते हैं वैसा ही काम सारा ऑफिस करे। हमारे यहाँ जब जीएसटी की हम बात करते हैं, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से लेकर मतलब हर चीज की चेकलिस्ट है फॉर एवरी अदर थिंग। और जब आप बड़ी फर्मों की बात करते हैं, तो वहां पर तो कई बार मैं मजाक में बोलता हूं कि वहां पर अंगद जी इस बात की भी चेकलिस्ट है कि बिल्डिंग से नीचे उतरकर गाड़ी में कैसे बैठना है और स्टार्ट कैसे करके घर जाना है, इसकी भी एक चेकलिस्ट है, एसओपी है कि ये फॉलो करो और घर पहुंच जाओ। मेरे ख्याल इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर प्रोसेस की एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के रखें, ताकि अगर आपका, और मैंने देखा है कई बड़ी सीए फर्मों में एक फर्स्ट ईयर आर्टिकल 1000 करोड़ रुपए की कंपनी का इंटरनल ऑडिट कर देते हैं, क्योंकि उनको 500 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि इन 500 सवालों के जवाब दे दीजिए। और जब आप उन 500 सवालों के जवाब दे देते हैं, तो आंसर्स में ही सब कुछ छिपा है। अब जब हम जीएसटी ऑडिट की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने 17 पेज की जीएसटी ऑडिट चेकलिस्ट निकाली हुई है। उन 17 पेज की जीएसटी ऑडिट चेकलिस्ट को अगर आपने पढ़ लिया और उनका जवाब दे दिया, तो कानून में पूरे कानून में, एक्ट और रूल्स और नोटिफिकेशंस में ऐसा कुछ नहीं बचता जिसमें से कुछ पेंडिंग रह जाए, और आप बहुत अच्छा ऑडिट परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए आपसे विनती है, आखिरी में मैं फटाफट बस 1 मिनट और, जो हमारे आईटी टूल्स हैं, जो वर्चुअल मीटिंग्स हैं,
देखिए दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि आज जगजीत, मैं और अंगद रेगुलरली हम मिलते थे, हफ्ते में 1 बार 2 बार मिलते थे। आज हमको 4 महीने हो गए पर्सनली मिले हुए, लेकिन हम इस तरह से अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले जगजीत और मैंने एक व्हाट्सएप कॉलिंग की थी और आपस में फेस टू फेस बात की थी। आज मुझे अगर बीकानेर में एक प्रोग्राम लेना है 2 बजे, तो मैं 2 बजे बजने में 5 मिनट पे लैपटॉप के सामने बैठता हूँ और बीकानेर पहुंच जाता हूँ। 5 बजे प्रोग्राम लेना है मुंबई में, तो 5 बजने में 5 मिनट से पहले लैपटॉप के सामने बैठता हूँ, मुंबई पहुंच जाता हूँ। इन आईटी टूल्स का बहुत ज्यादा यूसेज है हमारे पास मीटिंग का, और ना कि हम सिर्फ अपने आप को कोविड से सेव करेंगे, इस वायरस से सेव करेंगे, बल्कि हम बहुत सारी ट्रेवलिंग कॉस्ट, ट्रेवलिंग, वर्किंग, प्रोडक्टिव टाइम भी सेव करेंगे। मैं जगजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया, हम सबको बड़ा मजा आया, और धन्यवाद सर आपका। अब हमारे बीच में हमारे अंगद पाल सिंह जी हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। एक सेकंड जरा। अंगद जी हमारे 2011 के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और मैं तब से 2011 से इनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। ये दोनों मुझे जीएमसीएस के माध्यम से मिले थे। उस दौरान मैं जीएमसीएस में एज फैसिलिटेटर जाता था, और ये दोनों मेरे साथ उसी दिनों में जुड़े, और आज तक हम सबका साथ है। भगवान करे ऐसा साथ बना रहे। हमारे अंगद जी जो है वो बिजनेस फाइनेंस में मास्टर हैं आईसीआई के द्वारा 2012 में इन्होंने किया, और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से इन्होंने बीकॉम ऑनर्स पास किया। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, आईटीआईटी बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट के मेंबर हैं, और टेक्नोलॉजी लीवरेजिंग इनका बहुत बड़ा फेवरेट एरिया है, और बहुत सारी कस्टमाइज्ड एक्सेल यूटिलिटीज इन्होंने बनाई हैं, गूगल ऐप स्क्रिप्ट्स बनाई हैं, और अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म भी चलाते हैं सिंह एपी एंड एसोसिएट्स के नाम से। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंगद जी कि आप हमारे व्यूअर्स को आईटी से संबंधित और बहुत सारी जानकारी डाटा मैनेजमेंट से संबंधित दें, ताकि हम सब लोग घर बैठे ही अपने ऑफिस को, या एक जगह पर ना होकर भी अपने ऑफिस को अच्छे से मैनेज कर सकें। अंगद जी, ओवर टू यू नाउ। Thank you, Rajender sir, for that wonderful introduction, and thanks to you and the Spark Foundation for giving me the opportunity to share the dais with the people with whom my experience doesn't count at all. So thank you very much. To start with, मैं पहले जैसे सर ने बताया कि जीएमसीएस में हम मिले, तो 2011 में जब मैं क्वालिफाई हुआ हूँ तो उस वक्त मैं जीएमसीएस प्रोग्राम एज अ स्टूडेंट में गया उसमें, और वहाँ पर जगजीत सर और राजेंद्र सर दोनों ही फैकल्टी थे। तो राजेंद्र सर की एक बात वहां पर जो डायलॉग जो था वो मुझे याद है, और उसको मैंने अप्लाई किया है और आज भी अप्लाई करने जा रहा हूँ। राजेंद्र सर ने कहा था, आई डू नॉट बिलीव इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, आई बिलीव इन पावरफुल प्रेजेंटेशंस। सो सर, उस बात को मैंने बिल्कुल अपने साथ गांठ बांध लिया था, और आज तक उस चीज को मैं लेके चल रहा हूँ। एंड एट टाइम्स लाइक दिस आई ऑल्सो यूज इट एज अ टूल, as an excuse for not making the presentations, for not, taking out effort to make the presentations. भाई, आज तक मैं वही वो फॉलो करता हूँ, पावर पॉइंट की जगह पावरफुल में बिलीव करता हूँ। बस सर, मेरी भी यही कोशिश रहती है। और जैसे कि सर ने बताया, मैं टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल में भी मेंबर हूँ, सो इट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन विच टेल्स अस हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग विदाउट एक्चुअली हैविंग द प्रेजेंटेशन ऑन योर बैक। सो आई टेंड टू फॉलो दैट, बट that doesn't mean I undermine those who use PowerPoint, because it is a tool, it has been made for that purpose. But yes, my preference is not to use PowerPoint presentation, but to speak verbally. So that's my process. And now let me start with a small story. सर, मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, बट सैलरी उतनी नहीं थी, क्योंकि मैं क्वालिफाइड भी नहीं था तब मेरी सैलरी उतनी ज्यादा नहीं थी। एंड ड्यू टू मेरे फादर हमारे साथ नहीं थे, तो being the sole earning member of the family, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्निंग की जरूरत थी। सो आई वांटेड टू डू फ्रीलांसिंग। काम तो सारा आता ही था, चाहे इनकम टैक्स का हो, सेल्स टैक्स का हो, उस टाइम सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स होते थे। सो मुझे लगा कि मुझे जाके अपने बॉस से बात करनी चाहिए। सो आई वेंट टू माय बॉस एंड आई टोल्ड हिम दैट, सर, आई वांट टू डू एक्स्ट्रा फ्रीलांसिंग वर्क so that I can compensate for the lesser salary, and I can actually serve my family. And I don't want to do it in disguise. I want to be very transparent with you, so I want your permission for that.
तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझे यही कहा कि अंगद देखो, व्हाट आर यू बीइंग पेड फॉर हियर? आई सेड सर फॉर द वर्क. सो ही सेड ओके, बस काम कंप्लीट होना चाहिए. मेरे काम अगर तुमने पूरे रखे हुए हैं यार, तुम जो मर्जी करो. When I call you up, you are available. When anyone from the organization calls you up, आपको कोई काम है तो आप वो होने चाहिए available. I said okay sir, that will be done, taken care of. Still he had that apprehension भी 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी में ये जो काम करता है उसके अंदर कैसे कम कर लेगा. लिटरली वहां पर एक नीड अराइज हुई थी क्योंकि फैमिली में अर्निंग की जरूरत थी. मैंने अपने जो आईटी स्किल्स जो मैंने अपनी इंटर्नशिप में गेन किए थे, मैं सबसे पहले थैंकफुल हूं अपने जो मेरे प्रिंसिपल थे सीए विनीत गुप्ता जी. उन्होंने मुझे एक कीड़ा डाल दिया था आईटी का. उन आईटी टूल्स को यूज करके यू वोंट बिलीव 9 घंटे के काम को मैं 2 घंटे का बना चुका था अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. और उसी ऑफिस के अंदर कंपनी के अंदर बैठ के मैं अपना फ्रीलांसिंग वर्क एग्जीक्यूट करता था अपने क्लाइंट्स का. और मेरे बॉस ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा. इवन मैं अगर एब्सेंट भी हूं तो क्योंकि वो प्रॉमिस कर चुके थे कि अगर काम कंप्लीट होगा मैं कुछ नहीं कहूंगा. मैं अगर महीने में 15 दिन भी ऑफिस गया हूं, मुझे पूरे महीने की सैलरी मिल रही है जस्ट बिकॉज द वर्क इज कंप्लीट विद मोर एक्यूरेसी. क्योंकि आईटी इन्वॉल्व हो गई. मैनुअल काम हम जो करते हैं उसमें एक्यूरेसी का भी इशू रहता है, टाइम कंज्यूम करता है. देखिए मैनुअल वर्क के लिए आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है? टाइम वो ज्यादा कंज्यूम करता है, कॉस्ट वो ज्यादा कंज्यूम करता है, एक्यूरेसी उसमें कम होती है. सो व्हाई डू द मैनुअल वर्क व्हेन द आईटी टूल्स आर अवेलेबल. सो इस स्टोरी से मेरी जो जर्नी शुरू हुई कि मैंने आईटी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना शुरू किया. एंड देन आई learned more and more techniques how to automate. And Rajender sir, just let me know how much time I have so that I can structure accordingly. Can you please unmute and let me know how much time I can use? सर आपके पास 20 मिनट हैं सर. Okay, done sir. I'll do that. So अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने पूरा जितना हो सका मैंने आईटी ड्रिवन किया है. एंड जब ये लॉकडाउन हुआ ना, सो आप इस बात को मानिएगा, मैं इस लॉकडाउन मतलब आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द पैंडेमिक. आई एम वेरी सैड अबाउट द पैंडेमिक, बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द लॉकडाउन. इन दिस लॉकडाउन मेरे ऑफिस की वर्किंग में 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ा बिकॉज आई वॉज प्रोएक्टिव इन यूजिंग आईटी टूल्स मच बिफोर दिस लॉकडाउन केम इन. क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कि सुदीप जी ने बात की थी, वी हैव गॉन टू क्लाउड कंप्यूटिंग मच अर्लियर. 2 साल से मैं अपने टीम को क्लाउड पे ही काम कर रहा हूँ. क्लाउड पे अब बात आती है छोटी ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड पे कैसे जा सकती है. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्योंकि मैंने 2 साल इस चीज के ऊपर बहुत काम किया, तो मैं आपको प्रैक्टिकल इस बारे में बता सकता हूँ. क्लाउड के ना बहुत सोल्यूशंस हैं. मैं माइक्रोसॉफ्ट के एक्स CFO जो है, मैं उनके साथ बैठा हुआ था. सो ही वाज आल्सो टॉलिंग एंड वी वर डिस्कसिंग क्लाउड. एक टाइम पे अगर सर्वर लगाना होता था ना किसी कंपनी को तो 10 करोड़ 15 करोड़ का एक्सपेंस आता था. धीरे धीरे करके ये जितने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, Amazon वेब सर्विसेज, ये इस तरह के टूल्स आए जिन्होंने आपको एक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या एक पर मंथ कॉस्ट के ऊपर आपको देनी शुरू कर दी. आज भी अगर आप 10 यूजर्स और 100 GB की बात करें तो अराउंड 6 से 7 हजार रुपए पर मंथ पे यू कैन अवेल क्लाउड सर्वर सर्विसेज. बट अब मैं उससे भी और आगे जाना चाहता हूं. अब मैं ये क्लाउड सर्वर सर्विसेज यूज कर रहा था फ्रॉम आई वाज हायरिंग अ थर्ड पार्टी क्लाउड सर्वर. और उस क्लाउड सर्वर पे मेरा डेटा था. और जैसे कि सुदीप जी ने बताया, बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि जो कॉम्प्यूटेक्स केडीके या जो टैली जो हम लाइसेंस मल्टी यूजर लाइसेंस यूज करते हैं उसको लैन में तो यूज कर सकते हैं हम, बट जब टीम घर पे बैठी है या टीम क्लाइंट प्लेस पे बैठी है तो वो कैसे एक्सेस करेगी. सो क्लाउड से वो बहुत ईजी हो गया था. सो माई लाइफ वॉज गेटिंग ईजियर, बट देयर वर फ्यू डिसएडवांटेजेस. पहला ये था कि एक एप्रीहेंशन थी कि डेटा जो है वो थर्ड पार्टी सर्वर पे पड़ा हुआ है, तो अगर कभी कुछ ब्रीच होता है तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है कि मैं एकदम से किसी चीज को शट डाउन कर दूं. पहला ये था. दूसरा ये था कि क्योंकि सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी पे है तो मुझे डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करने जो कि हमारे ऑफिस में नॉर्मली यूज होते हैं. उस डिजिटल सिग्नेचर को मैं हार्डवेयर पे कैसे यूज करूं. हार्डवेयर तो इट इज लोकेटेड समवेयर एल्स, जो मुझे पता भी नहीं है कहां पर है, जिसपे मेरा डेटा पड़ा हुआ है, ये मेरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है. और तीसरा जो था कि पर मंथ कॉस्ट है लगभग 6 से 7 हजार पर मंथ का, मतलब एनुअली 72,000 की कॉस्ट भी एक छोटी प्रोफेशनल फर्म के लिए थोड़ी ज्यादा हो जाती है. सो इन ये सब चैलेंजेस जब सामने आ रहे थे तो मैंने वही नीड से इन्वेंशन होती है तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया और आई फाउंड आउट अ टूल जिससे मेरे अपने ऑफिस का जो कंप्यूटर है वही क्लाउड सर्वर बन गया.
मेरे ऑफिस के अंदर इस वक्त जो मेरा लैपटॉप, सिंपल लैपटॉप i3 लैपटॉप है, 4 GB की उसमें रैम है और 500 GB की 512 GB की हार्ड डिस्क है। वो लैपटॉप मेरा क्लाउड सर्वर की तरह यूज हो रहा है, यानी कि अब डेटा मेरे पास है, मेरी टीम घर से बैठ के इस सर्वर को एक्सेस करके इस पे काम कर रही है और मेरी टीम मुझे जस्ट फोन करती है कि सर ये डिजिटल सिग्नेचर उस सिस्टम में लगा दो, मैं लगाता हूं, दे आर एबल टू यूज दैट डिजिटल सिग्नेचर राइट वे। अब आप कहेंगे कैसे होता है, मैं आपको अब इसका अब राइट नाउ आई विल शो यू द डेमो दैट हाउ डज दिस हैपन। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि हम अपने क्लाउड सर्वर को कैसे यूज करना है। सो आई विल शेयर माय स्क्रीन। अच्छा और बात गौर कीजिएगा, ये मेरे एप्पल का लैपटॉप है और इसके अंदर देखिए मैं विंडोज एक्सेस करूंगा थ्रू दिस क्लाउड एप्लीकेशन। अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे अभी ये देखिए ये एक मैं एंटर कर गया एक अलग कंप्यूटर के अंदर। वैसे तो मोस्ट ऑफ यू वुड बी अवेयर ऑफ व्हाट क्लाउड सर्वर इज, बट जस्ट टू शो यू अ प्रैक्टिकल डेमो इन 1 सेकेंड। So now this my Apple system is getting entered into a Windows system. राजेंद्र सर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी आ रही है। अब ये देखिए मैं एक विंडोज सिस्टम के अंदर चला गया हूँ, एप्पल सिस्टम मैं अपना यूज कर रहा हूँ, विंडोज सिस्टम के अंदर चला गया हूँ और ये देखिए कॉम्प्यूटेक्स, टैली ओरिजिनल, ये सब मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। सो क्लाउड और इसी तरीके से मेरी सारी टीम कर रही है। वी आर वर्किंग ऑन अ रियल टाइम डेटा एंड रियल टाइम सॉफ्टवेयर टुगेदर। तो ये तो था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जो मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये आईटी टूल्स के अंदर जो जिस चीज ने मेरी सबसे ज्यादा हेल्प की है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। टीम की एफिशिएंसी एनहांस होगी सर, हम क्लाइंट को उसके प्लेस पे सर्विस दे पा रहे हैं बाय यूजिंग ऑल आवर सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर इंस्टॉल्ड इन आवर सर्वर सिस्टम। सो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं मैंने अपने ऑफिस के सिस्टम को बनाया, इट इज इन वन टाइम कॉस्ट, लाइफ टाइम वन टाइम कॉस्ट के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके मैंने इसको बना दिया। सॉफ्टवेयर का नाम भी अगर आप लिखना चाहें, माई राइड कनेक्ट, MYRIAD, माई राइड कनेक्ट। और एक और सॉफ्टवेयर आता है TS प्लस, आप कंपेयर कर सकते हैं आपको जौन सा पसंद आए इनमें से। सो देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो आपके ऑफिस के एक नॉर्मल कंप्यूटर को क्लाउड सर्वर बना देंगे। वेरी यूजफुल, और इसको आप जरूर करें। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउड के बाद नेक्स्ट जो है वो है आईटी टूल्स की। सुदीप सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमें टूल्स, आईटी टूल्स की यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जो उन्होंने कस्टम डेवलप किया। अच्छा एक जगह मैं करेक्ट करना चाहूंगा, राजेंद्र सर आप भी, क्योंकि सुदीप सर जा चुके हैं, तो आप उनको मेरी तरफ से ये मैसेज दे दीजिएगा कि जो जोहो है, जोहो इज नॉट जस्ट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग तो उसमें बहुत बाद में आया, उसका पहला फीचर यही है जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो सुदीप सर जो अपना फीचर दिखा रहे थे अपने सॉफ्टवेयर का, जोहो का पहला एप्लीकेशन वो है जिसमें वो टास्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो सब कुछ है। और अकाउंटिंग और इन्वेंट्री तो उसमें बहुत बाद में आया है। सो अब आईटी सुन रहे होंगे, सुदीप जी सुन रहे होंगे। अच्छा दैट्स रियली नाइस। तो जोहो इज अ वेरी इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन। अब यहाँ पर कोई जोहो की ऐड करने वाली बात नहीं है, बट सिंस आई एम यूजिंग इट, सो आई एम टेलिंग यू इट इज अ वेरी ऑसम एप्लीकेशन। उसके अंदर बहुत सारे टूल्स आपस में इंटीग्रेटेड है, रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल है। और मैं जोहो पे क्यों शिफ्ट हुआ, छोटा सा चैलेंज है सर, इनवॉइसिंग है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट को छोड़ दीजिए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनवॉइसिंग, जैसे सर ने कहा, बड़ा एक वो टास्क होता है जिसमें हम लोग फंसे रहते हैं। आप काम कर दिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रखो इनवॉइसिंग के लिए। अब लेट अस सपोज आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी रखते हो, कुछ 10-15 हजार सैलरी तो दोगे आप, और उसका काम है इनवॉइसिंग करना, रिसीवेबल्स मैनेज करना। क्योंकि टैली के अंदर सिस्टम खोल के बैठना, इनवॉइस बनाना पीडीएफ में एंड देन मेलिंग इट टू द क्लाइंट, इट वाज अ टीडियस टास्क। पर जोहो में इट्स लेस देन अ मिनट टास्क थ्रू योर मोबाइल एप्लीकेशन। आप अपने मोबाइल से इनवॉइस बना सकते हो। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म मैं इनवॉइस कहां बनाता हूं, मैं जब रात को सोने जाता हूं अपने बेड में लेट के, मुझे याद होता है अच्छा ये काम आज मैंने कर लिए, मोबाइल खोलता हूं, लेटे लेटे मैं इनवॉइसेस बनाता हूं, वहीं पे ही क्लिक करता हूं, सेंड टू क्लाइंट, अपने आप वहां से डायरेक्टली मेल होता है। रिमाइंडर्स जा सकते हैं,
रेकरिंग इनवॉइसेस आप उसके अंदर फीड कर सकते हैं जो आपके रिटेनरशिप के हैं, हर महीने अपने आप इनवॉइस बन जाएगा, क्लाइंट को सेंड हो जाएगा। जो क्लाइंट पे नहीं कर उसमें दिखाता है ये इनवॉइसेस आपके ओवरड्यू हो गए, उस पर जाके आप ओवरड्यू कर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न तो ऑब्वियसली डायरेक्टली फाइल हो ही सकती है, जैसे जेसॉन उससे जनरेट होती है टैली से, वैसे इससे भी हो जाती है। तो आप ये समझिए कि हम लोग क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। टैली हमारा कंफर्ट जोन है, आपको जोहो पे हाथ बिठाने में टाइम लगेगा, टैली पे हम लोगों का हाथ बैठा हुआ है, इसलिए हम टैली पे काम करते रहते हैं। जोहो इज एन एडवांस सॉफ्टवेयर, जोहो, क्विकबुक्स, होस्टबुक्स बहुत सारे आ गए हैं, बट मैं क्योंकि जोहो यूज कर रहा हूँ तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ। और बहुत इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर इन्वेंट्री, सीआरएम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बहुत टूल्स है जिनको आप यूज कर सकते हो। मैं हालांकि बेसिक अकाउंटिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, बट लिटरली वेरी यूजफुल। जैसी पेमेंट आती है आप उसमें मोबाइल ऐप से ही आप डालोगे पेमेंट रिसीव्ड, कौन से बैंक में आई, क्लिक करोगे, क्लाइंट को पेमेंट थैंक यू नोट भी चला जाएगा। सो रिकॉर्ड कीपिंग भी ऑल टाइम गुड हो गई, क्लाइंट को भी कन्विंसिंग चीज हो गई कि ठीक है जी इनवॉइस आता है, अच्छे फॉर्मेट में आता है, पेमेंट आती है तो उसकी कंफर्मेशन आ जाती है। सो इट्स अ वेरी गुड टूल। और मजे की बात है अभी जीएसटी डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव से 1.5 करोड़ से नीचे अगर आपकी टर्नओवर है, जो कि मोस्टली हम स्मॉल प्रोफेशनल्स की होती है, 1.5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है, जोहो आपके लिए पूरा फ्री है, बट प्रोवाइडेड यू शुड बी जीएसटी रजिस्टर्ड। तो जोहो आपके लिए फ्री है, तो आप जोहो जैसी एप्लीकेशन को जरूर यूज कीजिए। सो दिस इज द सेकंड थिंग दैट यू शुड मूव। सो फर्स्ट थिंग इज यू शुड मूव फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड डेटा टू अ क्लाउड बेस्ड डेटा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाउड बेस्ड, नॉट जस्ट डेटा, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अक्रॉस लोकेशंस आप काम करवा पाए। आप मानेंगे मैंने लिटरली इस लॉकडाउन में 2 हायरिंग्स की हैं और दोनों दिल्ली में नहीं है। मुझे कहीं और से रेफरेंस आई थी, 1 पर्सन इज सिटिंग इन बिहार एंड डूइंग हिज वर्क एंड 1 पर्सन इज सिटिंग इन पंजाब एंड डूइंग हिज वर्क। सो मेरी कॉस्ट भी रिड्यूस हुई, बिकॉज दिल्ली के पर्सन को हायर करना थोड़ा कॉस्टली होता है और बाहर थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई। अच्छा, मुझे कोई उसको यहाँ पे जगह नहीं देनी, अपने लैपटॉप्स वो यूज कर रहे हैं, अपने इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं और मेरा फर्स्ट क्लास काम हो रहा है, मुझे क्या दिक्कत है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग जरूर चाहिए। अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, अगेन मैं टैली के अगेंस्ट नहीं हूं, टैली के अपने बहुत अच्छे फीचर्स होंगे, बट टाइम के साथ आपको जो रियल टाइम सिस्टम पे आना है और मोबाइल एप्लीकेशन से आपको काम करना है, गो फॉर जोहो लाइक सॉफ्टवेयर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये जो है ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मेरा फेवरेट टॉपिक है और इसके बारे में बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके मैं आपको कुछ डेमो भी दिखाऊंगा। शिफ्टिंग फ्रॉम योर ऑफलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टू जी सुइट। आप जितना ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल ये यूज करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, मैंने बहुत यूज किए हैं। मैंने एक्सेल और विजुअल बेसिक के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई हैं, जो एक्सेल के अंदर मैक्रोज के अंदर कोडिंग करके होता है। बहुत प्रॉब्लम सॉल्व की हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस बना के 15-15 दिन के काम को 15-15 मिनट का काम बनाया मैंने। बट अब वो टाइम आ गया है जब आपको ऑनलाइन जाना है। उसके मैं आपको 2-3 रीजंस बता देता हूं व्हाई यू शुड शिफ्ट फ्रॉम एक्सेल टू स्प्रेडशीट। पहली बात, एक्सेल के अंदर कंट्रोल एस दबाते हो आप, ऑनलाइन आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है। वर्किंग ऑन स्प्रेडशीट, यू वर्किंग ऑन गूगल डॉक्स, यू वर्किंग ऑन एनी एप्लीकेशन दैट इज ऑनलाइन, आप वो रियल टाइम सेविंग है। सारे वर्जन अवेलेबल हैं पुराने, आपने एक्सेल में एक बार सेव कर दिया और आप चाहो कि नहीं 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 मुझे सब कुछ अंडू करना है और 10 दिन पहले जो मेरा जिस तरह से एक्सेल शीट दिखती थी मुझे चाहिए, वो नहीं हो सकता एक्सेल के अंदर। गूगल शीट्स के अंदर ये पॉसिबिलिटी है। आप गूगल स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हो, पुराना वर्जन आप रिस्टोर करना चाहते हो, 10 दिन का सारा काम गलत हो गया, आप पीछे जाके वो रिस्टोर कर सकते हो। Google spreadsheet integrates with your email, it integrates across spreadsheets, it integrates with your Google Docs, integrates with Google Slides। ये जो इनकी म्यूचुअल इंटीग्रेशन है, ये आपको इतनी पॉसिबिलिटी देती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बस आप उसी से समझ आ जाएगा आपको। 2 एग्जांपल दूंगा, चलिए। पहला एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक छोटी सी एप्लीकेशन जो मैंने खुद अपने लिए गूगल ऐप स्क्रिप्ट्स में डेवलप की। सर ये TM48 जनरेटर मैंने बनाया। TM48 आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस में है, तो ट्रेडमार्क जब हम किसी का अप्लाई करते हैं तो हमें उसे पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होता है, ठीक है। सो ये एप्लीकेशन मैंने डेवलप की। अब क्या होता था, जब भी क्लाइंट आया तो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी पहले स्टाफ ने बना के भेजी, फिर क्लाइंट रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा। हमने क्लाइंट को सिंपल एक ही गूगल फॉर्म भेज दिया, क्लाइंट ने यह नाम भरा, लेट्स से अंगद पाल सिंह, नेम ऑफ द पर्सन साइनिंग, लेट्स से किसी कंपनी का हो रहा है तो फिर डायरेक्टर के नाम आएगा। बट क्योंकि स्क्रीन नजर नहीं आ रही, स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आई एम सॉरी, मैंने शेयरिंग तो की हुई है। व्हाई इज इट हैपनिंग लाइक दिस? दोबारा करता हूं एक बार। हाँ जी प्लीज। शेयर स्क्रीन, ओके शेयर,
सर ये मुझे दिखा रहा है StreamYard is sharing your screen, बट वहां पे शेयरिंग में आ नहीं रहा. This is Ashish, can you hear me? I don't know why is this happening. Uh, Ashish, can you do the needful, please? Ashish, can you hear me? Ashish? सर अभी नजर आ रही है क्या? नहीं, अभी भी नहीं आ रही. ओके, सो आई डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग. चलो मीनवाइल मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सर, वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूं. सो मैंने एक एप्लीकेशन बना दी, ऑनलाइन गूगल फॉर्म है, जिसका मुझे कोई क्लाइंट फोन करता है, सर मेरा ट्रेडमार्क अप्लाई कर दीजिए. मेरे पास वो गूगल फॉर्म का लिंक है जो मैं इमीडिएटली उसको व्हाट्सएप करता हूँ. वो खोलता है, उसके अंदर 4 चीजें हैं: अपना नाम, कंपनी का नाम, तुम्हारी डेजिग्नेशन एंड अपना ईमेल आईडी. वो जैसे फीड करता है और सबमिट पे क्लिक करता है, इन लेस देन 30 सेकेंड्स अपने आप पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट होती है. वो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप उस क्लाइंट के मेल आईडी पे चली जाती है विद ऑल द रिटर्न इंस्ट्रक्शंस कि आपको इसको ऐसे प्रिंट करना है, ऐसे स्टैम्प साइन करना है इसके साथ, और इस तरीके से स्कैन करके हमें मेल करना है. एक छोटा सा एग्जांपल है ये तो. और इससे भी अभी मैंने लेटली एक असाइनमेंट कंप्लीट किया है जिसके अंदर, अब जैसे बात हो रही थी एसओपीज की, मैं जगजीत सर के साथ और राजेंद्र सर के साथ बिल्कुल अग्री करता हूं कि एसओपीज जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज सब कुछ डाइल्यूट हो जाता है. छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में एसओपीज नहीं होते. बट सर इसमें मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि एसओपीज बिकम ऑल द मोर रेलिवेंट एंड इजी टू यूज इफ दे आर आईटी ड्रिवन. अगर उनके साथ आईटी जोड़ दी जाए ना, मतलब जो कंट्रोल्स आप ह्यूमन को करने को कह रहे हो वो कर ही ना पाए जब तक कंप्यूटर उसको अलाउ ही नहीं करा, करेगा कैसे? सो अभी लेटली मैंने एक असाइनमेंट कंप्लीट किया है. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके एक टाइम पे 20 से 25 साइट्स चल रही होती हैं. वो वेयर हाउसेस, कोल्ड रूम्स बनाते हैं एफएमसीजी कंपनीज के लिए. तो मल्टीपल साइट्स चल रही होती है और मोस्टली देहात लोकेशन के अंदर, विलेज एरियाज में होती हैं. वहां पर लोकल प्रोक्योरमेंट्स हैं. सो ऐसा नहीं कि सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट होगी और वहां पे माल जाएगा, विच इज नॉट वायबल एज वेल. तो उनके जो प्रोजेक्ट इंचार्जेस हैं दे आर कॉन्स्टेंटली कॉलिंग कि सर ये पेमेंट करा दो, अच्छा इस चीज की पेमेंट करा दो. उनको बोलते हैं अच्छा व्हाट्सएप पे भेज यार, कोई पर्ची तो भेज, कोई वो तो भेज. सो वो सारा बड़ा एडहॉक सिस्टम था. तो हम जब ऑडिट करने जाते थे हम पूछते थे कि सर इन पेमेंट्स की डिटेल नहीं है. अरे यार मंगवा रहे हैं, प्रोजेक्ट इंचार्जेस ने भेजा नहीं है, फिर वो व्हाट्सएप पे ढूंढ रहे हैं. दैट वाज टोटली मतलब पुअर सिस्टम. उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि अंगद जी आप आईटी की बहुत बात करते हो, हमारे लिए सोल्यूशन बनाओ. तो हम माने. एसओपी देखो जी, डॉक्यूमेंट हमने सब कर रखा है, फॉलो कोई नहीं करता. तो हमने उनके सारे उस एसओपी को टोटल सिस्टम ड्रिवन ले आए. इसी तरीके से गूगल फॉर्म है, वो गूगल फॉर्म हर किसी प्रोजेक्ट इंचार्ज के मोबाइल फोन में आ गया. प्रोजेक्ट इंचार्ज को 5-7 फील्ड्स भरनी है, वो फील्ड्स भरे बिना उसको आगे जाने नहीं देगा. पर्ची अटैच नहीं करेगा तब तक रिक्वेस्ट वो सबमिट नहीं कर सकता. एमडी ने फोन उठाना बंद कर दिया, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, जिसको रिक्वेस्ट करनी है वहां से करे. वो रिक्वेस्ट सबमिट करता है, जैसे ही वो रिक्वेस्ट सबमिट करता है एक ऑटोमेटिक मेल एडमिनिस्ट्रेटर को चली जाती है, चेक कर लो एक बार सारा कुछ ओके है. जब वो उसको अप्रूवल करता है वो भी गूगल फॉर्म से करता है, और मेल के अंदर उसके पास लिंक है, जो अटैचमेंट्स अटैच करिए सब मेल में लग के ऑटोमेटिक, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिक. और ये किसी डेवलपर ने नहीं बनाया सर, अंगद पाल सिंह चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाया है. इतना इजी टू ये यूज है. सो उसके वो ऑटोमेटिक मेल जाती है, उस मेल से उसने चेक किया, अप्रूव या रिजेक्ट किया. रिजेक्ट किया तो वापस रिक्वेस्टर को मेल चली जाती है कि ये रिजेक्शन हो गया, ये रिमार्क्स है. अप्रूवल हुआ तो एमडी को चला जाएगा, एमडी ने चेक किया, अप्रूवल किया, मेल आ जाएगी वापस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, प्लीज मेक द पेमेंट. अकाउंट्स वाले ने पेमेंट की और पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच किया, पूरा डेटाबेस अपने आप तैयार हो गया. आप बताओ ऑडिट में मुझे दिक्कत कहाँ आएगी? मैं तो सिंपल कहूंगा सर मुझे तो एक उसका एक्सेस दे दो, या मैन्युअल, लेट सपोज कोई और ऑडिटर भी है, मेरे पास तो सिस्टम ही है उनका पूरा, बट लेट से कोई और ऑडिटर है तो कहेंगे ये स्प्रेडशीट है भैया, ये खोल ले, इसके अंदर हर पेमेंट की डिटेल है. कंट्रोल सेट हो गए, लीकेजेस खत्म हो गई. तो आईटी टूल जो है जी स्वीट, इट इज अ वेरी ग्रेट आईटी टूल. गूगल ऐप स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर इसके अंदर काम होता है. अगर चलो आप स्क्रिप्ट तक नहीं भी जाते, ऑल्दो स्क्रिप्ट जरूरी है अगर आप ईमेल इंटीग्रेशन करना चाहते हो जैसे कि मैंने की, आप स्लाइड्स के साथ इंटीग्रेशन करना चाहते हो, वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेशन करना चाहते हो, आप गूगल मैप से उठा सकते हो. अब जैसे वो लड़का बोलता था कि हाँ सर मैं यहाँ से यहाँ गया और मेरे इतने पैसे लगे, तो डिस्टेंस, अब वो बंदा लिखता नहीं है डिस्टेंस, वो लोकेशन सेलेक्ट करता है गूगल फॉर्म के अंदर कि मैं यहाँ से चला था, यहाँ गया था. डिस्टेंस वो गूगल मैप से अपने आप उठा के पॉपुलेट कर देता है. सो कंट्रोल इतने सेट हो गए.
सो इट इज अ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन। जी स्वीट की हम बात करें, सो दैट्स द रीजन। और स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए सर, बुरा ना माने, सुदीप जी ने तो डेवलप करवा ली अपनी एप्लीकेशन, ठीक है, ऑब्वियसली कॉस्टिंग आई होगी, जो अब मुझे नहीं पता, ये तो आप उनका इंटरनल है कि कितनी कॉस्टिंग आई होगी, बट जो मेरा अंदाजा है कि इस लेवल की एक एप्लीकेशन डेवलप कराने का कहीं भी खर्चा 2-5 लाख से कम नहीं होता है। अगर इस सारी चीज को जी स्वीट पे आप खुद कर पाए, नथिंग लाइक दैट। और इतना टफ नहीं है सर, मैंने भी ऑनलाइन ही सीखा है सब कुछ। मैं आपको वेबसाइट का नाम भी बता देता हूँ, BEN COLLINS, बेन कॉलिंस। बेन कॉलिंस एक आदमी है जो जी स्वीट सिखाता है, बहुत अच्छा। उसकी पेड कोर्सेज हैं, इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 7,000, 12,000, 21,000 ऐसे कोर्सेज हैं, बट लिटरली वो जो नॉलेज डिलीवर करता है, इट्स ऑसम। मैंने वहां से सारा कुछ सीखा और उसके बाद उसको मैंने अप्लाई किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में। टास्क मैनेजमेंट सर ने टूल डेवलप कराया, मैंने डेवलप कर लिया है। मैंने अपने यहाँ भी जी स्वीट के अंदर ऐसा टूल डेवलप किया है कि अच्छा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी, गूगल ड्राइव की सर ने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सर, हम गूगल ड्राइव को बहुत एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं, टोटल डेटा क्लाउड पे है। आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से हम लोग ड्राइव पे हैं कि आईपैड के अंदर, खैर यहाँ पर इतने अच्छे नजर नहीं आएगा, पर नहीं, सब कुछ अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अंगद जी, स्क्रीन शेयर अच्छा, कर। ओके। आशीष, कैन यू हियर मी? आई थिंक अब शेयर हो गई है स्क्रीन, हुई है सर? देखिए अब हो गई। हाँ, अब हो गई है स्क्रीन शेयर सर। रिक्वेस्ट नहीं आई हुई थी सर स्क्रीन शेयर की। हो गई सर, हो गई। अब तो नजर आई है ना सर? आगे आगे। ये देखिए, अब जैसे मैंने सिंपल सा जो मैं जिसके बारे में पहले बात कर रहा था, ये मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। नेम ऑफ द ट्रेडमार्क ओनर अंगद पाल सिंह, पर्सन साइनिंग अंगद पाल सिंह, तो डेजिग्नेशन सेल्फ हो गई जी। अपना रजिस्टर्ड एड्रेस डाल दिया, ABC लिख देता हूँ अभी मैं, और ईमेल एड्रेस डाला जहां पर मुझे ये डिलीवर्ड चाहिए, और किस अटर्नी से मैं काम करवा रहा हूँ, जैसे मैं 2 अटर्नीज के साथ काम करता हूँ, तो उसको सबमिट किया मैंने। अब विद इन अ मिनट ये यहाँ पर मेल में अभी मेरे पास आ जाएगा। अब ये मुझे यहाँ पर इंसल्ट ना करा दे, आई डोंट नो, बिकॉज टेक्नोलॉजी है, कहीं पे भी कुछ भी कर सकती है। हाँ जी, आ गया। मेरी स्क्रीन पे सर क्या नजर आ रहा है? ईमेल नजर आ रही है? अभी सिंह कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिखा हुआ है बस। अच्छा, वो वाला फॉर्म ही वही नजर आ रहा है, तो वो मैं इसको स्टॉप करके अब दूसरा टैब शेयर करता हूँ, शेयर स्क्रीन, और मेरा ईमेल वाला जो टैब है मैं उसको शेयर कर लेता हूँ। अब मेरी मेल नजर आ रही है सर? अभी नहीं आ रही, अब आएगी। हाँ, अभी ये देखिए, EM48 फॉर साइनिंग, ये देखिए यहाँ पर आ गया अपने आप ईमेल। डियर अंगद पाल सिंह, प्लीज प्रिंट द अटैच्ड EM48, पुट योर साइन एंड स्टैम्प, सारा टेक्स्ट लिखा आ गया। और ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट ऑटो जनरेट हुआ है, जिसके अंदर आई अंगद पाल सिंह, रेजिडेंट ऑफ ABC, ठीक है, ट्रेडमार्क एजेंट का कोड ऑटो पॉपुलेट हो गया, नीचे सब कुछ, ये सारा डॉक्यूमेंट ऑटो क्रिएट हुआ है उस गूगल फॉर्म से विद इन अ मिनट। सो मैंने कितना टाइम बचा लिया, मैं एक मैन पावर रखता है इसको बनाने के लिए। सो दिस इज द लेवल। और जो पेमेंट रिक्वेस्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, जो अपने क्लाइंट के लिए मैंने काम किया है, 1 सेकंड लगा के मैं वो भी शेयर कर देता हूँ, द टाइम अलाउज, राजेंद्र सर। जी जी प्लीज। ये वो मेल है, सिस्टम मेल मेरे क्लाइंट की, जो मेरे पास है सिस्टम, जिसके अंदर सारा डेवलप हुआ है। ये देखिए, ये सारी मेल्स आ रही है, इनके जो अप्रूवल के प्रोसेस हैं कि निकॉस ने अप्रूव किया, फिर एडमिन ने अप्रूव किया, ठीक है जी, अप्रूव हुआ, MD ने रिजेक्ट किया, MD ने अप्रूव किया। और इसके अंदर आप देखेंगे, जब MD को तो खैर हम सिर्फ फॉर्म देते हैं क्योंकि उनको ज्यादा डिटेल चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे के लेवल पे जब किसी के पास कुछ आता है, सॉरी, तो ये देखिए, जब एडमिन ने अप्रूव किया, तो जो उसने फॉर्म फाइल किया पर्सन ने, वो भी सारा यहाँ पर आ गया, क्या भरा है उसने, क्या अटैचमेंट उसने साथ में लगाए, वो भी आ गया, और एक इंटरफेस आ गया जिसके अंदर वो हर रिक्वेस्ट की स्टेटस चेक कर सकता है, और साइमल्टेनियसली उसको भी अपडेट आ रहा है। सो जी स्वीट एक ऐसी चीज है जो मैं आप लोगों को कहूंगा, यू मस्ट लर्न एंड यू मस्ट अप्लाई इन योर प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जो आपको जरूर हेल्प करे।
मैं आज की डेट में ना सिर्फ ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा हूँ, बट मेरे को इसके असाइनमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि आपने बताया एसओपी। सो एसओपीज को आईटी ड्रिवन बनाने के असाइनमेंट मिलते हैं, क्योंकि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं दे कैन नॉट। मैंने उनको पहले सैप का डेमो दिया था, मैं आपको फ्रेंकली ये बताऊं, जब ये उन्होंने बोला कि मेरे एसओपी को आईटी ड्रिवन कर दो, मैंने उनको सैप का डेमो दे दिया। सैप बिजनेस वन जो प्रोडक्ट है, लोगों को मालूम होगा उसके बारे में, प्रोफेशनल्स को। सैप बिजनेस वन एसएमई के लिए प्रोडक्ट बना है, लेकिन 8 यूजर्स के लिए 10 लाख रुपए पर एनम की कॉस्ट है सैप बिजनेस वन की। तो एसएमई क्या है, इतनी कॉस्ट जनरली बियर नहीं करता है। आप उनका मतलब आधे से ज्यादा जो उनके रिक्वायर्ड फीचर्स थे वो सब तो यहीं पे आ गए, पेमेंट अप्रूवल सिस्टम, और इसी के अंदर ग्रेजुअली अपडेट होता रहेगा। So IT is must for maintaining controls. अच्छा, SOPs में सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जगजीत सर, आपने कहा SOPs डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, इजी टू रीड होने चाहिए। इसी में मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, विजुअल्स में हो तो और बढ़िया, रादर देन रिटन फॉर्म जिसको पढ़ने में लोगों को बोरियत लगे। क्योंकि हमने इस जो यूटिलिटी बनाई, ऑब्वियसली SOP देना था स्टाफ को कि ऐसे आपको करना है, तो हमने फ्लो चार्ट्स बना के दिए, दिस दैट दैट सिंपल। फ्लो चार्ट फॉर्म में अगर हम उसको SOPs को डॉक्यूमेंट कर दें, नथिंग लाइक दैट। और गूगल ड्राइव की सबसे बड़ी खासियत, एक जो लास्ट में मेंशन करना चाहता हूं, ड्राइव फाइल स्ट्रीम। आप अपने गूगल ड्राइव को ब्राउजर में तो एक्सेस करते ही हैं, मोबाइल ऐप में तो एक्सेस करते ही हैं, आईपैड पे भी ऐप में एक्सेस करते हैं, लेकिन अगर आप उसी एप्लीकेशन को, उन्हीं सारी फाइल्स को अपने लोकली कंप्यूटर पे एक्सेस कर पाए फोल्डर की तरह, बिल्कुल पॉसिबल है सर। ड्राइव फाइल स्ट्रीम नाम की एप्लीकेशन है, गूगल की तरफ से ही दी हुई, उसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए, और वो मैं आपको 1 सेकंड में दिखा देता हूं। सर मैंने स्क्रीन शेयर की है, अलाउ कर दीजिए। आशीष मित्तल, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये देखिए, मैं अपने फाइंडर में गया, और ये देखिए गूगल ड्राइव नाम का यहाँ पर एक ऑप्शन है, मैं इसमें गया, माय ड्राइव। अब इसके अंदर जो मेरे फोल्डर्स हैं, जो मेरी फाइल्स हैं, एवरीथिंग हैज कम ऑन टू माय कंप्यूटर, जस्ट लाइक जैसे आप नॉर्मल अपने विंडोज में फोल्डर यूज करते हैं। ये देख रहे हैं आप? तो आप किसी को लगेगा यार ब्राउजर में जाके कौन काम करेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन है ना सर। सो जो टेक कंपनीज है ना, आपके कंफर्ट जोन का बहुत ख्याल रखती हैं, धीरे धीरे ही सही बट आ जाती हैं उस पर। तो ये देखिए सिंपल है, आप अपने मोबाइल में जैसे फोल्डर यूज करते हैं उस तरीके से आप गूगल ड्राइव को यूज कर सकते हैं, ड्राइव फाइल स्ट्रीम को राउंड करके। तो बेहद ऑटोमेशन पॉसिबल है सर। आधे घंटे का टाइम, जैसे कि जगजीत सर ने भी कहा कि आधे घंटे का टाइम ना उनके लिए इनफ था ना मेरे लिए इनफ है। बहुत कुछ है ऑटोमेशन में सीखने के लिए। आगे भी अगर राजेंद्र सर कहेंगे तो अगर मुझे 2 घंटे का या 4 घंटे का भी सर आप टाइम देंगे, सो आई कैन एश्योर यू दैट आई कैन कीप द क्राउड ग्लूड टू द प्रेजेंटेशन, बिकॉज मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने को। और मैं जो चीजें मैंने अभी सिर्फ ऊपर से बताई उनको मैं एक्चुअल में करके भी दिखा सकता हूँ कुछ चीजों को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड राजेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Wonderful, thank you, everyone is glued. Certainly we will be having more sessions of both of you in times to come very soon. Yes, now it is I must tell you that it was a wonderful session by all three of you, in fact, our Sudeep ji, Jagjit ji, Angad ji, and I sincerely believe that whatever they have discussed, whatever they have shown to you, would actually help you to enhance productivity or to convert our offices into online mode, virtual mode, real-time basis, or we will be able to increase our productivity, reduce the workload, reduce the time involved, cost saving. Many other factors are there, and it was a wonderful combo of everyone having. Even Sudeep ji with the software which was referring, he was also referring a software that is also available for sale to others as well, and that can be customized with a little cost. And for that matter, if you wish to talk to, we can always tell you about those things also in detail. And Jagjit ji, Angad ji, हम लोग और थोड़ा सा समय और प्लान करते हैं और डिटेल में हम लोग इस टॉपिक को और ज्यादा डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि डेडिकेटेड एक प्रोग्राम आप दोनों का सेपरेट होना चाहिए, सो दैट
You should be given a reasonable time to actually come out what you uh, normally have. Because you have not even digged up. The moment you would dig in, so you would bring out matter of 50 hours also. But even if you don't dig, then at least 2 to 3 hours should be given to you so that apparently things can be covered. So thank you, the entire management of Spark Foundation, all the people from Indore, Kota, Mumbai, from all places, all the members of Spark Foundation, Harish Dhyani ji, Nilesh Gupta ji, Pankaj ji, Vishnu ji, Amit ji, Sudeep ji, अभिजीत भाई और जिसका भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत सारे हमारे जो कोर कमेटी मेंबर्स हैं जो स्पार्क फाउंडेशन में डे टू डे बेसिस पर रेगुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. हम चाहेंगे कि और फर्दर एक्टिविटीज इसमें होती रहे. आशीष को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पूरा आईटी को बहुत अच्छे से संभाला. आशीष, कैन यू कम अप प्लीज? if you hear me, can you come up please? So thank you Ashish for doing the entire this thing, for helping us into IT. Other than you and Angad, I don't know how many of us do know the IT well. Of course, Jagjit ji now is expert into it. For me, it is an alien subject. As you all know that I'm more into I have my love towards goods and services tax. So as like Jagjit has love for this thing, Angad is for IT. Even Ashish also works with us in the GST division, but he is learning IT very fast. Thank you, Ashish. Thank you, Jagjit ji. Thank you, Angad ji. Thank you, Sudeep ji. Thank you, all the members of Spark Foundation. Thank you, all viewers, those who have made this program a grand success. Thank you very much. Thank you. Thank you.